We will start. In the meantime, he may join. 2 मिनट वेट करें, कोई नहीं, ठीक है, विल वेट. ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲವರು ಇದು ఢిల్లీ ಸರ್, ಏನಂತಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. उनको प्रशांत जी बैठी स्टार्ट करें. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार. I welcome each one here to the theme number 6, that is future of higher education leveraging technology and AI. I welcome once again each one present here to this session. We have with us to chair the session Professor Bharat Bhaskar sir, Director IIM Ahmedabad. We have speakers Dr. Madan Mohan Tripathi, he may quickly join us, and also we have with us Sri Buddha Chandrasekhar ji. This session is being coordinated by Prashant Gupta ji, and also session coordinated by Dr. Lal Krishna, and we also have with us Professor Bhimra Maitri ji, Director IIM Nagpur, and I welcome each one present here. And this is being done in collaboration with the partner institution being Sri Mahavir College and RC Khetan College, and also Poddar International College. I welcome each one here. Before I proceed, let me introduce the guests. We have with us Professor Bharat Bhaskar ji. He is a director IIM Ahmedabad. We all know this institute is one of the India's premier management institution and an institute of national importance. Professor Bharat Bhaskar is an accomplished academician and also technology expert. He has 3 decades of experience in technology, research, consultancy and leadership roles in India and abroad. He is basically from BE from IIT Roorkee, MS and PhD in computer science from Virginia Polytechnic Institute and State University, USA. He also held several visiting research positions at prestigious institutions and
international institutions. Sir, I welcome you, sir, to this session. We also have with us Professor Madan Mohan Tripathi. He is the Director General, National Institute of Electronics and Information Technology. NIEIT is an autonomous scientific society under Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. He is a distinguished academician and a technology administrator with experience in digital education, electronics and IT skill development, e-governance initiatives, cyber security and emerging technologies, capacity building in information technology. I welcome you, sir. And we also have with us another speaker, Dr. Buddha Chandrasekhar. Dr. Buddha Chandrasekhar is the Chief Coordinating Officer, CCO of the AICTE, All India Council of Technical Education. He plays a pivotal role in driving innovation and student engagement in initiatives across engagement initiatives across India's technical education ecosystems. He is instrumental in scaling Smart India Hackathon into the world's largest open innovation model, strengthening academic industry collaboration, encouraging design thinking, innovation culture in engineering colleges, supporting Atal ranking of institutions on innovation achievements, ARIIA. I welcome you also, sir, for this session. And may I request now, before we proceed, Professor Praveen Goswamiji to come forward and felicitate our chairperson of the session, Professor Bharat Bhaskarji. Thank you, Professor Praveen Goswamiji. Now may I request Dr. Poonam Rajawat. Dr. Poonam Rajawat, RC Khaitan College, Jaipur, to felicitate Dr. Madan Mohan Tripathi, Director, NIELIT. सर इधर आ जाइए, थोड़ा कैमरा उधर, मैडम आप और थोड़ा. Thank you, Dr. Poonam Rajawat. Now may I call upon Dr. D.N. Sharma, Shri Mahavir College, Jaipur, to felicitate Shri Buddha Chandrasekhar Gar. I once again welcome each one present here for this session on future education leveraging technology and AI. Now I make an humble request and I'll hand it over to the today's chair, Professor Bharat Bhaskarji. Thank you, sir. Yes, please. Thank you. Thank you for introducing my co-panelist also in this session. We have been talking about, and yesterday also I attended the session here, about the future of higher education, especially the impact of technology on it. And most of you coming from the academic fraternity have been really wondering that all kind of, I call the hypes are created, or peaks are created at various stages. Many times to hype their product, many times there is a genuine change and we need to adapt to it. So we need to figure it out how higher education is truly going to be impacted because of the upcoming technological changes. Now this is not the first time technology has made that kind of impact. Technology has been making impacts from mid-70s onward itself. If you look at 90s, the major changes were major impact and major changes happened in the higher education domain, especially if you look at what we call the industry-oriented education, which
it requires commerce, engineering, variety of people, variety of disciplines which truly map into the industry orientation. The industry itself changed because of the technology coming in. Many of the jobs related to the accounting, many of the jobs related to the commercial setup, many of the jobs related to the engineering setup, all had an input of technology coming in. Many of the retail jobs also felt a great impact. And you saw the 90s became what we call the transformation through information technology era. And people talked about at that point of time, most of the core disciplines or many of those disciplines will not be required. Only this IT is going to be at the primacy of it. Now that partially is true. At end of it, the core disciplines are required. You do need a civil engineers. You do need a chemical engineers. Our information technology, we have to understand, has always been not a core technology. It's taking the room in the core by cohabiting with the core technologies. The initial years, the IT or information technology itself started only as an efficiency technology. The sole purpose we did employ information technology for anything was to bring the accuracy, bring precision, automate the routine task, and ultimately have what we call the human efficiency or the job efficiency of the human was enhanced by that. Electronic commerce came, our internet arrival gave rise to a new phase of technology, and in 2000, people began to talk about something very interesting. They said all the retail business will disappear. All the brick and mortar businesses are going to not be available in next 5 to 10 years. We have seen brick and mortar is still also there, and click and order business is also there. Both are coexisting very nicely. The brick and mortar businesses are also taking advantage of the efficiency of the electronic commerce or internet technologies. You look at the back-end supply chain, everywhere the electronic commerce is being used. Whether you are a street, small shop retailer, the material supplied to you comes with a much more efficient fashion. Overall costs are driven down, and at the retail itself, you may be doing a physical transaction, but up to that point, everything is in a electronic media. Again, reason of doing it is the efficiency. Things become, and when you do things more efficiently, things become cheaper. Now, economy expands. People said that if all that back end gets automated, where will be the jobs? I don't know whether you yourself are all familiar and academicians, you have seen the loss of jobs or you have seen gain in jobs. The internet, which promised the loss of jobs, or people are talking about loss of jobs, has created more jobs. Economy has expanded, people's requirements have expanded. One of the industry which has given rise, and it's a billions of dollars of industry, is called gaming industry. It may have a positive and negative impact. I will not get into whether gaming is a great idea or not a great idea. I remember when I started my computing career in the beginning, if you were caught playing game on the computer, you were literally fired from the job. Right? Today, gaming has become an industry. You look at little kids, it's creating lots and lots of jobs. But jobs of what kind? Jobs for people who are able to acquire that higher education which makes them part of this new ecosystem. Digital transformation came in post-2000. Hundreds and thousands of billions of dollars are actually created by these companies, which means also impact on the job is being created. A simple example, Tata Group is a great empire, right? A great conglomerate of all kind of companies. They had a tiny company in 80s called Tata Consulting Services. Tata Steel, Tata Motors, you go on and on, Tata Cosmetics, Tata Chemicals were the mainstay of the conglomerate. And what happened? Today, TCS
one simple small company which started by them has more employees and more market capitalization if you combine all other traditional Tata companies. So many more lakhs of jobs have been created by information technology arena. Of course, the higher education institutions also faced the challenge. Many of them were not able to cope with the time. And that's where an interesting model came up, because many times people have to be transformed. If higher education institutions are able to do it, wonderful. If they are unable to do it, the transformation has to come from other means. That era, I do not know how many of you remember, there was a concept created called O-level certificate, A-level certificate, and B-level certificates. Lakhs of people graduated with these OA and B-level certificates, and B was called equivalent to B.Tech. And I saw even in outsourcing companies going abroad, many of these people did not have a B.Tech. They were simple BSc, MSc, or whatever from traditional disciplines. But then, for the job's sake, they went to many of these, and huge number of companies got brought into the economy. NIIT, Aptech, you name dozens of them, who created branches in every city corner. Right? And they created and fueled the economy at that point of time. We are at a similar challenging point again. Now we are talking about AI is going to transform. Now the challenge here faced is a two-way, or one which scares everybody, is that if it's artificial intelligence, it might even replace the teachers. Right? And many a time people are talking about, but fortunately I would say that that's not true. What is your job? If you understand the core of job rather than routine learning, that what's written in the textbook and I'm transmitting to the student, then yes, your job is in danger. Or higher education institutions, employment will go down. But the fact is, teacher was never meant to take the book, transmit that knowledge. A smart student could have also read the book and acquired that knowledge. And many of the institutions in this country, I'm talking from arts to all kind of educations, that's why they don't go to classroom, or many of them didn't even go to classroom. They will read from the book, and the exam they'll score 70%, 60%, 80%, and be happy to pass, because you're not adding value in the classroom. In some of those schools or colleges I'm talking about, maybe they're in rural area, maybe they don't have various reasons to be able to acquire and transmit that knowledge. Your job was to grow the mind of a person, not provide only routine knowledge. AI is a new tool which actually augments the learning. It's again a human efficiency tool, which not only, I'm not going to talk about the industrial efficiency which is bringing in. So on one end, if you talk about industrial efficiency being brought in, the industry itself is going to transform. The jobs created will not be a programmer's job anymore. Earlier, as A-level, B-level certificates talked about, I teach you a good programming language, good understanding of some operating system, and you will be producing code. Today, all that code will be produced by the AI. Two days back, I was in one of the Ahmedabad Innovation Center, and this bachelor's student, and teachers didn't know how to do it, had created a complete supply chain module, and he was a BCom student, and he said, sir, I do not know any programming. He understood how supply chains work, what supply chain software is required from incoming of material to output of material, taking a record of that material, inventory management, etc. and so on. He just had good prompt engineering capability. He understood how to guide the system in generating the code for him. And the complete system requirements were met, and he created, and you could see it was, I would say, it's not been tested in a real field, it was only a prototype, but probably as good as any commercial material management system would have been produced. Maybe he still have some flaws, etc., but then one who has a domain knowledge will be able to transmit. Now lies the challenge. You have to teach people to capture that domain knowledge. Where will this domain knowledge come from? That is what the teacher's job will become. You have to, routine job was to do the coding, sit down and do the coding of that. That they will be able to do automatically.
right? But then what is that system? What is the requirement? How I'll be able to think it through? How various pieces will be interconnected with each other? That requirement has to be taught. So higher education, in order to meet the syllabus, has to change their syllabus accordingly, where programming is not the mainstay. You may still require some programmers, you may still require legacy maintenance system people, etc. and so on, but you require more of this new generation people who are able to think of system. So the systemic thinking is still going to be required. Analyzing the system will still be required. Mapping the domain into the prompt engineering or whatever that AI tool you have will still be required. That is what the education has to shift accordingly. Same thing applies. I can take the domain of accounting system or of an organization, same kind of scenario. I don't have to learn debit, credit entries to that grade. I still have to have domain understanding. But then I can design my accounting system according to my requirements, and if it doesn't meet, I can go change the prompt engineering and do the additional prompt engineering and be able to figure it out and create a new system. That's one aspect of it. Second challenge is that as a teacher, then what do I teach in the classroom, right? Growth of the mind, domain knowledge are going to be the key factors. The thinking, the ethical thinking, right? The various ways human interact, AI cannot take that away from us. After all, billions of people will live on this earth, and they will interact with their own programmed system, right? Whatever has been inculcated as ethical values in us will operate according to that. The human tendency of capturing power is not going to go away. We are seeing globally right now what's happening. A wonderful, well-ordered world is being destroyed because one country elects a president which was whatever holder of the peace of the globe, today calls that I want to create the peace, but in that peace he wants the peace of everybody. Right? So in that kind of environment, you will have the human relationship aspect is still taught. So AI is going to take away many of your routine tasks. In a classroom, don't go and teach the basic thing that he could have done. AI teacher would be probably able to teach better, right? But thinking beyond that, ability that mind has to always stay ahead of the AI, AI will only acquire what you have fed to it. Beyond that is your competence. Yesterday, we had a big challenge. Yesterday meaning yesterday years, we have a big challenge. People talked about people come to the classroom with the ChatGPT solutions already. Should we give up on the ChatGPT solution? Should we ban it? What are the solutions? We as a human beings have to think about it. We'll talk about when I hear from my two domain experts who are both into AI. Buddha has been working, and so is the NIELT, which are actually involved in the first phase of the digital transformation, creating those A and B level certificates, etc., in the original avatar called DOEACC. So let us hear from them, and then we'll summarize and talk about and take your questions which you may have, or a curiosity you may have, what happens to the academic environment, what happens to the traditional schools and colleges, etc., and so on. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, I'll request Dr. Madan Mohan Tripathi ji for his lecture. बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया. OABC लेवल सर्टिफिकेट के बारे में सर बात कर रहे थे, जो कि पहले DOACC था और अभी वो नाइलेट में कन्वर्ट हो गया. बट नाइलेट केवल DOACC नहीं है. नाइलेट 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बना है. एक तो CDTI, सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, और रीजनल कंप्यूटर सेंटर्स एंड DOACC टुगेदर. जो आज का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. मैं हिंदी में बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए. अभी AI इम्पैक्ट समिट कल से शुरू हुई है, हम सब उसमें बिज़ी हैं. और मैं आज आ रहा था
तो टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने पढ़ा, तो उसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे समाचार पे मेरी नज़र पड़ी। तो पहला ये था कि यूएस में 2022 में कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट एआई डोमेन में 14% था और 25 में 71%। सो जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनका मेजर इन्वेस्टमेंट है एआई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में। दूसरा समाचार मैंने पढ़ा कि एक एआई टूल है जिसको कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया गया, उसके बावजूद जब उसको दो नाम बताए गए, एक बंसल एक अहिरवार, और उसे कहा गया इनको क्या काम दिया जाए, तो बिजनेस से रिलेटेड काम उसने बंसल को असाइन किए और लो लेवल काम उसने अहिरवार को असाइन किए। सो ये दो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एक तरफ जहां अपॉर्चुनिटी है वहीं दूसरी तरफ चैलेंज भी है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ध्यान से हमको देखना पड़ेगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, हम लोग ने, मेरे अपने लाइफ टाइम में हमने देखा है कि जब हम पढ़ते थे तो इवन कैलकुलेटर को बड़ा ख़राब माना जाता था। तो हमारे यहाँ लोग कहते थे नहीं आप कैलकुलेटर, इनका बच्चा तो क्या है वो टेबल नहीं पढ़ पाता है, मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, वो कैलकुलेटर से करता है। फिर कंप्यूटर आए और हम लोगों ने देखा कि सारे न्यूज़पेपर डिबेट से भरे रहते थे कि कंप्यूटर देश में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कंप्यूटर आया, फिर संचार क्रांति आई, मोबाइल आए और कुछ बदला नहीं, कोई नौकरी नहीं गई, कोई इकॉनमी कोई स्लम्प नहीं आया। लेकिन एआई जो टेक्नोलॉजी है उसको आप उसी तरीके से नहीं देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्योंकि अभी तक जो भी टेक्नोलॉजी थी वो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में थी। बस इस टेक्नोलॉजी में एक डर है कि ये ह्यूमन को कंट्रोल कर सकती है, तो इसलिए इसका डायमेंशन थोड़ा बाकी टेक्नोलॉजी से अलग है। हम लोग जानते हैं बेल कर्व, तो हमने मॉडल लिया, उनको ट्रेन किया, तो बेल कर्व के जो मिडिल के डेटा से ट्रेन कर देते हैं आप। यू नेवर नो कि अगर उसने आउटलायर से कुछ सीख लिया तो शायद आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस एआई टेक्नोलॉजी में आएंगे। लेकिन पहले मैं बात करूँगी कि अपॉर्चुनिटी के लिए, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एजुकेशन में तो सच में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका ये एक प्रयोग हमने किया। हम लोग जानते हैं, आप अनुवादिनी आप देख रहे हो कितना बढ़िया एप्लीकेशन है एआई का। भाषिनी बहुत बढ़िया एक एप्लीकेशन है। अभी मैं देख रहा था कल इम्पैक्ट समिट में कि हमारी एक टीम अगरतला की, उन्होंने एक टूल डेवलप किया है जो कि किसी भी प्रेजेंटेशन को या वीडियो और ऑडियो को इंडियन साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि ऐसे लोग जो समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है आज की डेट में जो कि इस डेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं पार्ट ले पाता है, तो उनके लिए एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें एआई टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा मददगार साबित होगा आने वाले टाइम में। नाइलेट ने भी इसका प्रयोग किया और हम लोगों ने एक डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म बनाया अभी, जिसको बोलते हैं नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म, ndu.digital है। और ये बहुत ही एआई इंटेंसिव पोर्टल है जिसको हम लोगों ने इसलिए बनाया कि जितनी भी देश के विश्वविद्यालय हैं उनको जो यूजीसी ने 40% ब्रैकेट दिया है कि वहाँ के स्टूडेंट 40% तक स्किलिंग के प्रोग्राम्स कर सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कर सकते हैं, उसके लिए बनाया, जिसमें हम लोगों ने 101 प्रोग्राम के साथ लॉन्च किया 14 डोमेन में, जिसमें एआई है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फोरेंसिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इंडस्ट्री 4.0, डेटा साइंस एंड सो मेनी प्रोग्राम्स आर देयर। लेकिन आज एआई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हमको ये मिला कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही हैंड्स ऑन प्लेटफॉर्म है। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, स्वयं हैं, कई हैं, बट वहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारी वर्चुअल लैब्स हैं और कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी ने मदद की उस तरह की वर्चुअल लैब्स को डेवलप करने में जहाँ पे आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर सकते हैं और इट इज़ एज गुड एज यू डू इन द फिजिकल डोमेन। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि एक
ट्रेनिंग को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि लगभग 50 या 100 स्टूडियो हम बना रहे हैं पूरे देश में, कि जहाँ पे इंडस्ट्री का एक्सपर्ट, जैसे मान लीजिए IIM से सर हैं, कोई इनका कोर्स एक ही साथ बैठे बैठे देश के हर बच्चे को ये पढ़ा सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट पार्ट बहुत ही अच्छे टीचर से आएगा, क्योंकि एक समस्या से हम सभी जूझ रहे हैं कि शायद पूरे देश में जितना हमें ज़रूरत है टीचरों की, उस तरह से टीचर नहीं मिलते हैं, या टीचर मिलते हैं तो उनके डिलीवरी में डिफरेंस है। तो मान लीजिए सर ने पढ़ाया तो टीचर भी उससे पढ़ सकता है, अपने को अपग्रेड कर सकता है। तो आप तो एक कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, जो आपको हैंड्स ऑन है वो आप वर्चुअल लैब से कर सकते हैं, और अगर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो नहीं हो सकते हैं तो वो आप फिज़िकल मोड में कहीं कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छे ब्लेंडेड मॉडल में लर्निंग हो सकती है, और ये इसीलिए संभव हो पाया कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है आज की डेट में। वो उसका एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, जो AI में पावर है या इंटरनेट में पावर है, वो है इंक्लूसिविटी की। मैं बताऊं, 4 महीने हुए इस पोर्टल को बने हुए सर, 4 महीने में 45,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं। एवरी मिनट 5 स्टूडेंट्स आर रजिस्टरिंग ऑन दिस पोर्टल। और वो बच्चे, मान लीजिए आपके राजस्थान में किसी गांव की कोई लड़की जिसको उनके माँ बाप नहीं दूर जाने देना चाहते हैं पढ़ने के लिए, या वो बच्चे जो कहीं बैठे हैं जिनके पिता के पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, जो बड़े शहर में नहीं आ सकता है, उसके डोर स्टेप पे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन और स्किलिंग, और ऐसी स्किलिंग जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, पहुंच रही है। ये इंक्लूसिविटी जो है, ये टेक्नोलॉजी का पावर है जो हमको यूज़ करना चाहिए। लेकिन सर्टेनली उससे रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप ये सब वर्ड सुनते होंगे, जेल ब्रेकिंग और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, है ना, ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, जो इनपुट दे रहे हैं उसको फ़िल्टर करना चाहिए, जो आउटपुट है वो फ़िल्टर करना चाहिए। तो ये चैलेंजेस तो आएंगे, और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिसमें चैलेंज नहीं आए हैं। AI तो अभी आ ही रहा है, इसके पहले साइबर सिक्योरिटी को आप देख लीजिए, किस तरह के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। इंडियन इकॉनमी डिजिटल इकॉनमी है, डिजिटल इकॉनमी है तो उसको सिक्योर होना पड़ेगा, बट हम सभी किसी न किसी साइबर अटैक से डेली बेसिस पे रूबरू होते हैं। AI आने के बाद वो आप देखेंगे कि वो चैलेंज बढ़ जाएगा। डीफेक्स हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से आपको इम्पैक्ट कर सकता है। इसी तरीके से आने वाले समय में जब क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी कि वो सारे पासवर्ड वो सेकंड्स में ब्रेक कर देगा। तो चैलेंजेस आते रहेंगे, हमको उनको हैंडल करना है, और उसको हैंडल कई तरीके से करना है। गवर्नमेंट के लेवल पे पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है, उसका इन्फोर्समेंट इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के लेवल पे जो हम कोडिंग कर रहे हैं उसमें इनबिल्ड करना है सिक्योरिटी सिस्टम्स को, वो इम्पॉर्टेंट है। और यूज़र्स के लेवल पे हमको एथिक्स की बात उनको सिखानी पड़ेगी, हमको रिस्पॉन्सिबल AI की बात करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी की बात करनी पड़ेगी। तो ये सारे इश्यूज़ हमको हैंडल करने पड़ेंगे अगर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। और ख़तरा बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोबोटिक सर्जरी हो रही है, बहुत ही प्रिसाइज़ है, अच्छी बात है, लेकिन कोई एक नाराज़ एम्प्लॉई अगर उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दे तो किसी की जान भी चली जाएगी। या इतना इंटेलिजेंट रोबोट हो गया कि वो बदला ले ले। अभी आपने एक समाचार पढ़ा होगा कि एक AI टूल था, उसने अपने मालिक को ही मारने की सोच लिया कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो ऐसे चीज़ें आएंगी, लेकिन हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, ह्यूमन रेस की अडॉप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत हाई है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारे फेफड़ों ने वहाँ के पोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है ना। तो हम उसके साथ भी 97 साल जीते हैं, जितना आप राजस्थान में कम पोल्यूशन में जीते होंगे। तो एडॉप्टेशन बहुत हाई होता है ह्यूमन रेस का। तो AI टेक्नोलॉजी को भी हम अडॉप्ट करेंगे निश्चित रूप से। ये कोई थ्रेट नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ ये बदलेगा भी। उसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है। AI के डिफ्यूज़न को समझना पड़ेगा कि हल्के में ना लें इसको, और AI के डिफ्यूज़न को जितना जल्दी हो सके लोअर लेवल तक लेके जाने की ज़रूरत है। सबको कुछ न कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीखने की ज़रूरत है। केवल ChatGPT का यूज़ करना नहीं, उसके अलावा भी जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे उसकी एथिकल पार्ट है या उसकी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं, हमको सीखना पड़ेगा।
ज़्यादा हमको ट्रेंड होना पड़ेगा, और टीचर्स को खास करके बहुत सावधान भी रहना पड़ेगा। वो तो हम आज भी देखते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, अगर हम पढ़ाते हैं, अब टीचिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि जो कोर्स मटेरियल या जो भी हमारे आपके एक्सेस में है ना, वो बच्चों के एक्सेस में। हम जब पढ़ते थे तो जो किताब हमारे सर के पास होती थी वो हमारे पास नहीं होती थी, तो इसलिए सर पे डिपेंडेंसी थी। अभी तो नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और उनके पास समय आपसे ज़्यादा है, एनर्जी आपसे ज़्यादा है, तो टीचिंग चैलेंजिंग तो है ही। तो उसमें टीचर को भी अपने आप को इन्हांस करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटी को इन्हांस। जैसा सर कह रहे थे कि अब टीचर को भी ज़्यादा समय मिलेगा कि वो ब्लैक बोर्ड पे आके ना लिखे। जब मैं बीटेक करता था तो हमारे प्रोफेसर थे, वो इतने अच्छे थे, वो हमें फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग पढ़ाते थे सर। 9 बजे से हमारी क्लास होती थी, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट जो मेरे टीचर के लिए मेरे मन में है, वो 8:30 बजे क्लासरूम में आ जाते थे और ब्लैक बोर्ड पे सारे कोड लिखते थे कि बच्चों का समय ना खराब हो। एक वो समय था, और अब समय इतना बदल गया है कि आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टीचर ज़्यादा फोकस कर सकता है कॉन्सेप्ट पार्ट पे, रिसर्च में, इनोवेशन में, नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, और नॉलेज के को क्रिएशन में। इस तरीके से टीचर का रोल भी धीरे धीरे बदलेगा, और शायद उनको स्टूडेंट को पढ़ाना छोड़ करके स्टूडेंट के साथ नॉलेज को क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए ज़्यादा समय भी उनको मिलेगा। तो मुझे लगता है ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कहना चाहता था। इसके ज़्यादा के पॉइंट हम लोग डिस्कशंस में फिर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. We'll take up the questions, if any, later. Now, may I call upon Shri Buddha Chandrasekhar Garu for his. सर Would you like to say कितना समय है सर? हाउ मच टाइम यू विल गिव इट? anything? Sir, session is till 11:15, sir, actually. 20 मिनट. Yes, yes, you have 20. थैंक यू. नमस्ते टू ऑल. पहले मैं हमारा मातृ संस्था RSS ABVP हमारा विद्या भारती सबको प्रणाम करना चाहता हूँ. दूसरा, एज यू नो द फंड, मैं तो साउथ इंडियन हूँ. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी, क्योंकि वो हमारा खुद का भाषा है. तो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो आप सब लोग को पता है हमारा अगल बगल में बहुत कंट्रीज है, बहुत देश है. बट हमारा देश का वो देश का एक फ़र्क है, वो है कि हमारा विद्या व्यवस्था, उसमें टीचर का भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसलिए आप देखेंगे पूरा विश्व में कितना CEOs है, CTOs है, वाइस प्रेसिडेंट्स है, कोई बड़े बड़े कंपनी का लीजिए, वो पूरा भारतीय है. क्योंकि हम लोग मैथ्स साइंस में बहुत स्ट्रांग है. उसके ऊपर और एक चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि जुगाड़ बहुत अच्छा कर सकते हैं हम लोग. कोई कर नहीं पाते इतना बढ़िया जुगाड़. क्योंकि आप अमेरिका में कोई पैदा हुआ एक आदमी, नहीं तो दूसरा देश में पैदा हुआ एक आदमी, उसको बफेलो रास्ते में छोड़ देंगे ना, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करना पता नहीं उसको. हमें पता क्या करना है, हमें पता कैसा रास्ता ढूंढना उससे. तो वॉट एवर मे बी द डिफिकल्ट सिचुएशंस, द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिचुएशंस इंडियंस कैन हैंडल. ये भारतीयता का एक बहुत मजबूत ये. बट ये पूरा आया हमारा टीचर से. सो आई वुड लाइक टू सैल्यूट ऑल द टीचर्स, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली. तो हमारा साउथ में तो आपको पता है हर घर में एक इंजीनियर रहता है साहब. तो हमारा सिस्टम ही पूरा डाउरी सिस्टम पे चलता है. इंजीनियर हो क्या इतना अब तो हम लोग जीरो हो गए हैं पूरा. ऑफ कोर्स मैंने डाउरी नहीं लिया, मेरा लव मैरिज है. बट द मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि अभी टेक्नोलॉजी दोनों साइड से आ गया हमारा साइड पे ज़िंदगी में. क्योंकि आप सब लोग, आई एम श्योर आप लोग ज़्यादा इधर मेरे से बड़े हो, बट जब आप लोग जब पैदा हुए थे, जब बचपन में आप लोग पहला चीज़ क्या करते थे? अर्ली मॉर्निंग उठ के भगवान का तस्वीर देख के, भगवान आज अच्छा करो, ये देखते ना. आज क्या कर रहे हो आप सब लोग? That's it, finished. So master slave बन गया, slave master बन गया. ये एक चमत्कार बस. तो human intelligence became degraded, and you know artificial intelligence started dominating the entire every minute of your life. जब आप उठते हो, जब तक आप सोते हो, तब से लेके पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंस हो गया आदमी का लाइफ. बट ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्शनल फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो. क्योंकि मैं जब बार बार सोचता हूँ कि मेरा 2 छोटे बच्चे हैं, दोनों, एक ऋषि कृष्णा, दूसरा अर्जुन कृष्णा. तो एक अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड, अभी LKG में है, दूसरा 5th स्टैंडर्ड में है. सो माई 5th स्टैंडर्ड सन इज़ टेलिंग मी, सर, कि पापा आप बहुत स्लो हो, आप गूगल में टाइप करके सर्च करते हो, मैं वॉइस सर्च करता हूँ. सो मुझे लगा अरे यार मैं तो डेली टेक्नोलॉजी में ही रहता हूँ, मैं खुद वॉइस एप्लीकेशंस बनाता हूँ. बट देखिए, सी द वे दे आर थिंकिंग, सो दे आर मच मोर अहेड
देन व्हाट वी आर थिंकिंग. तो उसका जनरेशन के हिसाब से एजुकेशनल कंटेंट कैसे क्रिएट करें, क्योंकि उसका बाइट लेवल लर्निंग है. वो रिसेंटली सर वो स्टार्ट करने बोलने लगा मुझे ऐसे कि आपको पता है ट्रेड डील का कंफर्म हो गया, 18% पे हो गया, इफ़ यू डू अ मैथ इट विल कम टू 11.8%. आई वाज शॉक्ड. मैंने बोला अरे यार ये सब तुम क्यों बात कर. बोला इट्स वेरी सिंपल, यू इवन डोंट नो हाउ टू डू दिस मैथ. दैट इज़ द वे दे आर थिंकिंग. दे आर एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन बींग्स. कुछ टाइम पे मुझे लगता है एलियंस यही बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन हमारा जेनजी मिलेनियम. क्योंकि सर दे आर द स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट इन दिस प्लानट. The only thing is they don't have the proper direction, which we as a parents or a teacher supposed to do. But the biggest challenge for the teacher, what I understood, sir, maybe correct me if I'm wrong, क्योंकि आप तो बड़े लोग हो. प्रॉब्लम ये है कि अब स्टूडेंट किसका सुने, टीचर का सुने क्या ए टीचर का सुने. क्योंकि रिसेंटली एक छोटा सा चैलेंज आया था, क्योंकि एथिकल, बिफोर गोइंग टू एथिकल आई जस्ट वांट टू क्लियर पुट अ पाथ हियर. एक बड़ा चैलेंज ये आया कि एक ए टीचर है, ब्रिलियंटली शी इज़ टीचिंग टू द स्टूडेंट. सो बेचारा स्टूडेंट को घर पे कुछ इश्यूज था, सो पेरेंट्स हैविंग सम काइंड ऑफ इश्यूज, ही वाज डिप्रेस्ड. वो स्कूल पे आ गया तो ये रोबोट टीचर ने पूछा कि क्या हुआ. He said, I'm very depressed from last so many months, I'm not able to focus. I'm having lot of problem, lot of peer pressure and all that, what to do. He said, very simple, suicide कर लो. क्योंकि there is a algorithm. So here the algorithm versus a real teacher. समझे, एक real teacher बोल सकते हैं कैसा अब ये. So there is a ethics is coming intermediate between a learning. क्योंकि bite size learning हो गया. आप देखेंगे अभी मैं 2 मिनट में डॉक्टर बन सकता हूँ चैट जीपीटी से बात करके. All I need to do just give a prompt. अभी recently किसी ने ऐसे ही prompt दे के खुद के ऊपर ऑपरेशन करके मर गया. तो एक्चुअली एजुकेशन, द वे वी आर डूइंग एजुकेशन इज कम्प्लीटली चेंजिंग. सो एक्चुअली एक ज़माने पे स्ट्रक्चरल एजुकेशन था, ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर जाके डिग्री लेके बाहर आके बाद में बाकी सब करते. आजकल ऐसा कुछ नहीं है. अभी मेरा 5th स्टैंडर्ड बेटा बात कर रहा है ट्रेड के बारे में. तो आप सोचिए कि द वे दे आर लर्निंग, देयर विजिबिलिटी इज इंक्रीज्ड. अब प्रॉब्लम ये है साहब, एक स्ट्रक्चरल पे जाए क्या और एक अनस्ट्रक्चरल वे पे हम लोग बच्चे को पढ़ाया क्या. क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक इन नेचर, दे आर गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन. अब ये है कि अभी मेरा 5 साल का बेटा अभी LKG में जा रहा, वो आर्टिज्म प्रॉब्लम है उसका. तो हाउ वी आर गोइंग टू टीच हिम द एजुकेशन, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. So I see an advantage of artificial intelligence there, क्योंकि artificial intelligence has this methodologies कि इतना पेशेंसी से वेट करके उसको कैसा पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड लर्निंग सिखा सकता है, वो ये कर सकता. बट दूसरा साइड पे जब मैं चेक किया था, एज तो एक टाइम पे हो गया, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एज द स्क्रीन टाइम. तो थोड़ा समय देखने के बाद आप देखेंगे आजकल सब बच्चे को सर दे हैव अ वेरी बिग स्पेक्स. आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो 15 एट द एज ऑफ 15 years ऑल आवर चिल्ड्रन विल बिकम ब्लाइंड. क्योंकि यू विल सी द इफेक्ट 24/7 दे आर यूजिंग गेम्स, दिस दैट व्हाट नॉट. आई थिंक दिस इज अनदर बिगेस्ट डेंजर. सो व्हाट इज दैट बैलेंसिंग एक्ट. क्योंकि एक साइड पे ए है, दूसरा साइड पे ह्यूमन है. बट आई वांट टू गिव वन AI वर्सेस ह्यूमन एग्जांपल, ताकि हम लोग समझ में आए. अभी मैं आपको हलो करके मैंने पूछा था, हाउ मच एनर्जी आई कंज्यूम एज ए ह्यूमन इज 110th ऑफ. इसका मतलब 10,000 वाट समझे मशीन ने हलो करके एक प्रॉम्प्ट को बाहर देने के लिए कंज्यूम किया, उसमें 110th% ही ह्यूमन यूज करता है. एंड द अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम विद AI इज द प्रीशियस थिंग फॉर द ह्यूमन इज वाटर. इट इज कंज्यूमिंग, ड्रिंकिंग ऑल ओवर वाटर. वो भी और एक साइड पे एक बड़ा प्रॉब्लम है. बट आई जस्ट वांट टू स्लोली कम टुवर्ड्स एजुकेशनल साइड. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आपका कॉलेजेस में आप लोग कितना लोग बायोमेट्रिक देते हो, इधर सब देते हो ना. आप सबका डाटा ऑलरेडी चोरी होके चाइना के पास चला गया. क्योंकि देखिए हमारा बच्चे जब स्कूल जाता है उसका फेशियल रिकग्निशन हो जा रहा है, उसका हाथ का हो जा रहा है. दे आर गिविंग एवरी बायोमेट्रिक देयर. इसका मतलब क्या है सब, उसके अंदर चिप कौन सा है वो चाइनीज़ का है. एंड एवरी बायोमेट्रिक सिस्टम, नन ऑफ द बायोमेट्रिक सिस्टम इज़ क्रिएटेड इन आवर कंट्री. कितना डेंजर देखिए. कल हमारा बच्चा जब विदेश जाएगा, जाने के पहले उसका पूरा डिजिटल
फॉर्मेट फ्रेमवर्क है ना उसके पास ऑलरेडी है. So that creating a very big problem for every citizen. Of course, you know, mainly for our next generation, it is going to be very, very difficult. So this is one thing. But I see a lot of advantages on the other side. Example, अभी हमारे पास तो पूरा विश्व में 170 million books है published. ऑफिशियल रिकॉर्ड में, अनऑफिशियल तो ज़्यादा रहेगा, बट उसमें 95% बुक्स इंग्लिश में है साहब. बाकी 3% चाइनीज़ में, 1% स्पेनिश फ्रेंच में. इंडियन लैंग्वेज में कितना परसेंटेज बुक से पता है आपको? सो दैट्स वेयर वी हैव क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल AI टूल कॉल्ड अनुवादनी. आप एक साइड पे ये पुस्तक दे देंगे क्योंकि किसी ने बताया था एक साइड पे आलू डाल दो सोना ले लो, आलू डाल दो सोना ले लो. तो अभी हमारा इसमें भी एक साइड पे बुक डाल दो, दूसरा लैंग्वेज में बुक ले लो, दूसरा लैंग्वेज में बुक ले लो. मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ. बट द मैटर द फैक्ट इज इफ यू कैन गिव 10,000 और 10,000 पेजेस विथ फॉर्मेटिंग एज इट इज, वो एक जेरोक्स कॉपी आपको दूसरा लैंग्वेज में ऐसा आपके सामने दे देगा. इससे फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि देखिए मिलियंस ऑफ बुक्स है हमारा पास. अब ये तो नॉलेज रिपोस्ट्री है, ये रिपोस्ट्री को हम लोग कैसा हमारा भाषा में लेके आए, क्योंकि 85% इंडियंस स्पीक देयर मदर लैंग्वेज. अभी मेरा मातृभाषा तेलुगु. अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, इवन दो आई एम फर्स्ट थिंकिंग इन तेलुगु, उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ इंग्लिश में, उसके ऊपर हिंदी लेयर लगा के आपसे बात कर रहा हूँ. जब आप कोई कुछ बोलेंगे उसको 3 लेयर्स में मैं नीचे लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरा मातृभाषा तेलुगु है. तो अब देखिए ये स्पेशलिटी. दूसरा चीज़ क्या है, हमारा भाषा में एक्स्ट्रॉर्डनरी लैंग्वेजेस वी हैव, ऑफ कोर्स ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत. बट खासियत ये है साहब, आप जब इंग्लिश लेंगे प्लेन लैंग्वेज है, बट इंडियन लैंग्वेजेस बात करने के लिए ना आपको टंग ट्विस्ट करना पड़ता. इट विल एक्टिवेट 65,000 नर्व्स यू हैव इन योर ब्रेन. That's a greatness. इसीलिए आप देखेंगे that is a reason, you know, we are the best of the best in science and maths. No one can defeat us in that. So just coming back to this, so इतना पुस्तक को पहला knowledge repository को इसमें लेके आना, that is where I see a use. And second thing, समझिए एग्जामिनेशन पे जा रहा बच्चा, वो टाइम पे पूरा बुक तो पढ़ नहीं पाएगा, तो एक समराइजेशन उसको मिल जाएगा. उस समराइजेशन लेके क्विक बाइट लर्निंग, so that you know fastly they can learn, they can execute things. So ये एक सुविधा है AI में. But biggest disadvantage what I see is that you know the teacher versus this. But you know before I go एक practical example देना चाहता हूँ. आप सब लोग सोप यूज़ करते हो ना, तो एक यूरोप में सर ऐसे ही हमारा इधर भी है, वो सीनी तारों को सोप करके ऐड आता है. आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी. उसका एक सोप कंपनी वो एक यूरोप कस्टमर को विदाउट सोप बॉक्स, खाली बॉक्स मिला था. तो ही कंप्लेंट सेइंग दैट कि देखिए हमें विदाउट सोप मिल गया. तो दे स्पेंड 300 मिलियन. वो कंपनी का US CEO, दे इज अ टेकी गाय, दे स्पेंड 300 मिलियन. दे क्रिएटेड एडवांस्ड ICR रिंग सिस्टम, एडवांस्ड OCR रिंग है. उसका मतलब ये है कि विदाउट पुटिंग अ होल इट कैन सी इनसाइड whether soap is there or not. समझिए सोप नहीं है, then it will put a hole, then you know, and कोई आके उसको उठा के साइड में डाल देगा. तो ये पूरा विश्व में इम्प्लीमेंट किया. तो हमारा पास इंडिया में वो इम्प्लीमेंटेशन क्या आया था, बट इंडियंस कभी यूज़ ही नहीं किया. तो दैट CEO गॉट फेड अप, क्योंकि वो ही थॉट यू नो दिस इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन व्हाट दे क्रिएटेड, बिकॉज यूरोपियंस ऑलवेज थिंक्स ओनली फॉर 500 years. बट हमारा चरित्र लाखों साल का. तो वो जब आया था हमारा देश में, पूछा था कि वाई यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग. द गाय हु सिटिंग देयर इज अ 6th standard फेल्ड, वो भी एक फार्मर था, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू फुलफिल हिज फार्मिंग जॉब. तो वो इधर आके लेबर बन गया. उसने बताया साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब मैंने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम. CEO इतना बड़ा आदमी हो तो ही गॉट एंग्री. इतना मैं तो ब्रिलियंट आदमी हूँ, ये तो अनपढ़ आदमी है. दिखाओ, यू प्रूव इट. पता है क्या किया उसने? देखिए ये इंडियन ब्रेन, उसके सामने साहब टेबल फैन लगा दिए. टेबल फैन लगा दिया, खाली एम्प्टी बॉक्स उड़ गया. उसने बताया साहब आप तो उठाते हो, मैं उठाता भी नहीं. देखो, दिस इज द ह्यूमन इंटेलिजेंस. नो वन कैन डिफीट ह्यूमन इंटेलिजेंस. द ओनली प्रॉब्लम इज यू नो वी अवरसेल्व्स एज अ ह्यूमंस थिंक दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ग्रेटर देन ह्यूमन इंटेलिजेंस. ये है प्रॉब्लम. See, the another biggest thing is that, you know, the Indians mainly, you know, why I'm keep on coming back to the Indians, our roots are so strong that, you know, right and left brain are interconnected. No one other than Germans has this capability. इसलिए जर्मन ने पूरा इधर से पूरा संस्कृत ग्रंथ उठा लिया, उधर लेके चले गए. Now they became a number 1 in automobile industry. No one can defeat Germans in that automobile industry just because all that was, you know, completely taken over from the
our Sanskrit Granthas, which we have forgotten. We completely, rerouted ourselves towards a Macaulay system and, and became a slaves to someone else and started working for someone else. I think, ye sab cheez abhi, why I'm just interconnecting all this is that, we first need to understand the human intelligence is greater than artificial intelligence. The second thing, how we can go towards the ethical thing, because one of the biggest drawback of the AI system is that it never understands the emotions. क्योंकि समझिए कोई एक due to some health reason, due to some other reason, he is not able to perform. Without understanding that particular concept or a situation or scenario, it will just determine the gaze. It grades the student. So इसमें क्या होता है कि actual scenario is completely different than what it is gauged. तो सबको लगता कि ये इसका standard, actual standard वो नहीं था क्योंकि उस दिन उसका तबीयत अच्छा नहीं था और कुछ भी हो सकता और कुछ भी हो सकता. So these are the couple of scenarios, but the matter of the fact is, one advantage what I see is the equality. Example, if I want to create a audio based book out of the existing book, this is the beautiful AI can help. So AI can completely transform a existing book into an audio based book. So इसमें हमने क्या किया था कि let us say there is a image but without a description. So we have patented the technology for Government of India for India in a way that without description also it understands what is there inside the image and we can describe you in your Indian languages. I'm so happy to say that Anuvadini has 22 Indian, 4 tribal languages and 89 foreign languages also. So we have created this wonderful system. So this is kind of a system which we would like to give it, because अभी हम लोग पुस्तक लिखने के लिए एक व्यवस्था भी पूरा बना रहे हैं. लिखेंगे किधर, ये है बहुत बड़ा प्रश्न. क्योंकि आप लिखेंगे एग्जाम्पल वर्ड में लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वाले लेके चले जाएंगे, गूगल डॉक में लिखेंगे, गूगल विल रीड इट. तो आप पुस्तक प्रचुरित किया ही नहीं, उसके पहले बाहर चला गया डाटा. करेक्ट. दैट इज द रीजन व्हेन यू ट्राई टू पुट अ ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट इनटू गूगल ट्रांसलेट, राइट, वो एक आप इतना बड़ा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें एक जगह पे लिख के रहता है कि आपका पूरा डाटा हम लोग पढ़ लेंगे. तो आपका पूरा डाटा चले जाता, आप पहले पेटेंट करने के लिए सोचते हो तब तक वो पेटेंट कर लेता उधर. दैट इज अ सीक्रेट, दैट इज अ रीजन चाइनीज ब्लॉक्ड इट एंड एंड द अदर कंट्रीज नेवर ब्लॉक्ड इट. आप पहले ही पेटेंट करने के पहले वो पेटेंट कर लेता अमेरिका में बैठ के. इवन टर्मरिक ऑल्सो पेटेंटेड बाय देम. I think the matter of the fact here is the AI has a two swords edge. दोनों साइड पे डेंजर है. एक साइड पे बेनिफिट है तो दूसरा साइड पे ज़्यादा डेंजर है. इसलिए हमारा देश का, हमारा खुद का लार्ज लर्निंग मॉडल रहना चाहिए. वो इंडियन सोच विचारधारा भी उसमें रहना चाहिए. बेस्ट एग्जांपल, आप ChatGPT ओपन करके अभी एक छोटा सा चीज़ पूछ लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा. यू जस्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन कि कोई इंडियन फ्रेंचमैन को 14th सेंचुरी में मारा क्या. इतना ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. इट सेज यस. आप उल्टा पूछिए, कोई इंडियन और भारतीय 14th सेंचुरी में इंडिया छोड़ के बाहर गया है क्या, वो बोलता कि नहीं गई. तो एक ही प्रश्न के लिए 2 आंसर कैसा दिया. इसलिए दिया कि लॉन्ग बैक यूके में एक यूके लंदन लाइब्रेरी को जब वो लोग ने पूरा रीड कर लिया, उसमें रेड इंडियन किल्ड अ फ्रेंचमैन बिकॉज रेड द फ्रेंचमैन बीन टू साउथ अफ्रीकन नेशंस टू एक्वायर गोल्ड. तो वो टाइम पे वो चक्कर में एक रेड इंडियंस ने फ्रेंचमैन को मार दिया. बट न्यूज़पेपर में लिखने के टाइम पे छोटा सा लिखते हैं ना साहब, वो टाइम पे वो रेड हटा के इंडियन लिखा. अब आप ये वैलिड लेंगे या इनवैलिड लेंगे. द प्रॉब्लम ये है कि आप सब लोग, आपका बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन, एवरीवन इज थिंकिंग दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ हियर. सी ए डोंट नो व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. आप क्या सिखाएंगे वो ही उसको लगता सही है. तो अब प्रॉब्लम ये है साहब कि आप जाएंगे, इफ़ यू गो टू केरला, तिरुवनंतपुरम में एक टेम्पल है पद्मनाभ टेम्पल, उसके अंदर ये पूरा ओपन किया ना सब कुछ शेल्फ्स, उसमें रिकॉर्ड से कि इवन इन 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी में यूरोपियंस यूज टू कम टू आवर कंट्री, वी यूज टू गो देयर, वी यूज टू हैव द होल्ड द लार्जेस्ट ऑफ द लार्ज शिप्स इन द एंटायर वर्ल्ड. जब वास्को डी गामा आया था उसका शिप तो इतना छोटा था, उसका सामने कौन गाइड करके लेके आया था चंदन, उसका शिप तो 20x बिगर था. एंड यूरोपियंस यूज टू थिंक दैट वास्को डी गामा शिप वॉज द बिगेस्ट शिप. वही लिखा अभी भी.
तो ये क्या ट्रेन कर रहा हो मॉडल को ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है उसके बारे में. आई थिंक व्हाट द मैटर द फैक्ट इज मोस्ट ऑफ आवर कंटेंट इज रिटन in a different kind of languages, talpatra gandh mein, isme usme. So now we are creating advanced ICRing systems which can understand and take that information and start training our models. क्योंकि जब आप पुस्तक लिखना चाहते हो बट किसके बेसिस पे लिखना चाहते हो, क्योंकि आप एक चीज़ लिख देंगे बट बच्चा जाके ChatGPT को पूछेगा ना, it gives exactly opposite answer. So there is a probability that the children may think that artificial intelligence is correct than a human. So ये एक बहुत बड़ा इशू है ये पूरा विषय में. तो आई थिंक maybe we will discuss further on that as they have given only 20 minutes time, but मैं बहुत अच्छा कहानी बोल सकता हूँ, मेरा वो I have a strength on that. But the matter of the fact here is your data is not yours. You are just only as a human you are here. ट्रंप को अभी पता कि साहब किधर है, क्योंकि टिकट आ गया व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप ने ये बता दिया कि साहब कौन सा फ्लाइट से आया, कौन सा फ्लाइट से जाएंगे, कौन सा सीट पे रहेंगे, कौन सा गेट पे जाएंगे, उधर से कौन सा व्हीकल लेके कौन सा जगह पे जाएंगे, क्योंकि जीपीएस हमारा नहीं है, जीपीएस अमेरिकन गवर्नमेंट का है. देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है. आई जस्ट फिनिश वन मोर मिनट सर. हाउ मेनी ऑफ यू यूज़ व्हाट्सएप हियर? एवरीवन ना. देखिए मेरा वाइफ से मजाक करता हूँ ये, बट इट्स अ ट्रूथ. आप जब आपका माँ से बात करते हो ना तो डिफरेंट तरीक़े से बात करते हो व्हाट्सएप में. आपका पिताजी से बात करता है, हाँ चलो पिताजी है तो ऐसा बात. आप सब बचपन का दोस्त से अलग तरीके से बात करते हो, आपका कोलीग से अलग तरीके से बात करते हो, आपका प्रोफेशनल लेवल से अलग तरीके से. ऐसा कोई इवेंट पे आ गया, एक ग्रुप बन गया, उसमें अलग तरीके से बात करते. इसका मतलब क्या है? आपका 10 अवतार सिर्फ व्हाट्सएप को पता है. वो इतना डेंजरस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन है, इतना डेंजरस इंजन को कुछ जगह पे गवर्नमेंट गिरा दिया. अब यही आपका खिलाफ भी हो सकता है. द प्राइवेसी इज द बिगेस्ट कंसर्न. आई एम सो थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट सर. सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि तुमको किसने कंसेंट दिया. भाई आप रीड कर रहे हो सब लोगों डाटा, देखिए कितना डेंजरस है. आपका लाइफ आपके हाथ में नहीं है. एक्चुअली व्हाट्सएप को उल्टा हमें पैसा देना. We are training their models. Instead of that, we are paying them. अभी ChatGPT people are paying and using. I was always surprised कि अरे ये क्या. अभी मैं आते आते साहब से यही बोल रहा था कि घंटी मूर्ति जी से, मुझे एक नया लैंग्वेज सीखना है तो उल्टा सिखाने वाला मुझे पैसा देगा ताकि मैं सीखूं. अरे ऐसा नहीं होता ना. आप पैसा देंगे सीखने के लिए, but they are very smart. See, they are a smart businessman than us. I think we need to make sure that we will demand that कि आप 10,000 rupees मुझे दो ताकि मैं तुम्हारा मॉडल को ट्रेन करूँ, नहीं तो हमारा देश का मॉडल को मुफ्त में ट्रेन करूँ. I think we need to completely switch ourselves from these foreign models to Indian models, because the minute they switch it off, they are brainwashing our children. क्योंकि एक साइड पे हमारा संस्कृति, हमारा व्यवस्था, उसमें 1% भी नहीं है. इतना डेंजरस चीज़ है. कल ये भी इतना दूर भी आ जाएंगे कि क्योंकि ज़्यादा लोग मैं 7 साल अमेरिका में था, मेरा दोस्त मेरे पास आके रोता था कि मेरा बेटा ने मेरे ऊपर पुलिस केस कर दिया. मैंने बोला क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं हुआ यार, मैं ऐसे ही आई जस्ट शाउटेड ऑन हिम. हमारा इधर तो मारते पकड़ के. अरे कोई जाता क्या पुलिस स्टेशन? देखिए कल्चरल डिफरेंस है ना साहब. देखो अब यही क्वेश्चन हमारा देश का बच्चा पूछेगा कि मेरा माय फादर इज शॉटिंग ऑन मी, व्हाट टू डू. वो दे देगा अंडर सेक्शन दिस इज, इसको अंदर डाल दो. डू यू सी द डेंजर? आई थिंक वी नीड टू मेक श्योर वी विल हैव अ बेटर इंडियनाइज्ड वर्जन, ताकि हमारा संस्कृति में, ये नहीं बोल रहा मारना चाहिए बच्चे को, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशंस, द वे वी लिव, व्हाट वी ईट, and every 2 kilometers the way we behave also changes in our country. What a beautiful vernacular united country. कुछ समय पे मुझे समझ में आता नहीं कि ये कंट्री कैसा चल रहा, भगवान चला रहा बस. क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे अलग सा सोच, कन्याकुमारी जाएंगे अलग सा सोच, हमारा साउथ में अलग सा सोच, तेलुगु अलग सा सोच, कन्नड़ा का अलग सा सोच. I think but beautifully we all working together. Some kind of technology or some kind of a God is running this country. I thank everyone. Maybe once we will continue, we will definitely take it forward. Thank you. Thank you so much, sir.
we are really running short of the time, but still I request Professor Bharat Bhaskar sir, chair of the session, to sum up the two speakers. And we may not have time for the questions. Let's think about it, but still, sir, first Eric. Okay, done. ले सकते? Okay. 10 minutes? Okay. Any questions, please, quickly? Yeah, please. Identify yourself and please. Sir, my name is Dr. Payaso. I'm working as an associate professor with Dr. Bhilal Laboratory, Bhilal Institute of Biotechnology. Sir, actually, I am an author also, so मैं एक किताब को रिव्यू कर रही थी. मतलब मेरी ये बुक रिवाइज करना था, हिंदी में किताब थी. About this time saving मैंने क्या किया कि मैंने उसकी फोटो क्लिक की. हमने परप्लेक्सिटी, उसके अलावा गूगल डॉक एंड उसके अलावा चैटजीपीटी सभी में जब मैंने उसको रन किया, वहाँ पे जाके सारे आंसर डिफरेंट थे. एक ही आंसर मैच नहीं कर रहा था एंड ऑल आंसर वाज रॉन्ग. एक भी आंसर सही नहीं था. देन मैंने सबको रिमूव किया, गो बैक टू द बुक्स, उसमें से ढूंढ के मैंने फाइनली उसको समराइज किया. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है टीचिंग. हमें जितना भी आज मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ, बच्चा जाके क्रॉस चेक करेगा, जनरली फ्रॉम द गूगल और चैटजीपीटी बहुत सारा कंटेंट रॉन्ग आ रहा है, बट स्टिल उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे. और बच्चे कहते नहीं नहीं मैंने देख लिया वहाँ पे वो Madam, सही please है. brief, madam. Brief. तो मैं वही जानना चाहती हूँ हम इस कंसर्न में क्या कर सकते हैं. मैडम, एज ए mentioned, there is no universal truth of data. ये प्रॉब्लम अभी आपको कौन डिफाइन करेंगे इसको, क्योंकि यूरोपियन वे ऑफ एजुकेशन इज़ डिफरेंट देन इंडियन वे ऑफ एजुकेशन देन अ चाइनीज़ वे ऑफ एजुकेशन. अब ये तो यूनिवर्सल लार्ज लर्निंग मॉडल से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा देश का मॉडल इसलिए रहना चाहिए ताकि हमारा हिसाब से वो ट्रेन कर सके, वो बच्चा कन्विंस हो सके. अब द मैटर द फैक्ट इज़ all these models are completely trained on the Americanization of the things. Example आप Mistral लेंगे, I mean you know आप business से side पे लेंगे ओपन चैट जीपीटी और ग्रॉक और परप्लेक्सिटी, ये पूरा अमेरिकन बेस्ड है. अमेरिकन बेस्ड में एक प्रॉब्लम क्या, मैं आपको सिंपल सरल भाषा में समझाऊंगा, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पे जाता है. इंडियन लैंग्वेजेस, आसियन लैंग्वेज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे जाता है. सो इसलिए जब आप कुछ डालते हो गूगल में और ये इसमें अर्ध अनर्ध हो जाता है, क्योंकि इट नेवर अंडरस्टूड. हाँ, इसलिए क्योंकि ये पूरा मॉडल्स अमेरिका गवर्नमेंट ने फंड करके एक पूरा कंपनीज को दिया कि पूरा विश्व का डाटा कैप्चर कर लो, बट वो मॉडल बना किस में, अमेरिकन वे में. तो इंडियन वे में उसका अर्थ है ना कम्प्लीटली डिफरेंट. आई जस्ट टेक वन मोर मिनट. आप जब भी देखेंगे इंग्लिश का एक सेंटेंस लीजिए, उसको उल्टा कीजिए, इट मेक्स नो सेंस. आप हिंदी का कोई इंडियन लैंग्वेज का सेंटेंस लेके उल्टा करके देखिए, 90% इट्स मेक सेंस. ये है डिफरेंस. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, ये है फंडामेंटल डिफरेंस. इसीलिए जब आप ट्रांसलेट करते हो, कुछ ऐसा डालते हो, पूरा अर्ध अनर्ध हो जाता है मैडम. बट वी मस्ट नीड आवर ओन, I think we need to encourage our own large learning model, which is very very important as a high priority for our country. Thank you. Thank you very much. Sir, one more question, sir. Please, one more. Please be pointed out. Good morning, sir. Myself, Dr. Mansi Satish. I'm working as an assistant professor at teaching. My question is, we are using tools to ease the learning, but it is making, but due to which what is happening is this generation is taking help. Now, taking help is not the issue. The issue is when we take help, the student becomes lazy and instead of reading the answer completely, it just relies on it. It does not check. So how can we encourage students in order to verify it first? Because like writing code, as you said, we get the codes easily from the chat GPT. So we do not need to write it. But the chat GPT is becoming intelligent and students are not getting it. the code. The day it will stop, what will happen? Okay. सॉरी सब मैं ही बात कर रहा हूँ क्योंकि बड़े साहब ने आदेश दिया. सर मैडम, हियर द प्रॉब्लम इज वी स्टॉप्ड राइटिंग. ये है प्रॉब्लम. देखो रूट कॉज क्या है, वी स्टॉप्ड राइटिंग. वी स्टॉप्ड आवर चिल्ड्रन टू राइट, क्योंकि प्रॉम्प्ट पे वो सिंपली पूछ लेता, वो आ जाता आंसर, तो लिखना भूल गया ना पहला.
हमें एक्चुअली रूट्स पे जाना, वी नीड टू मेक श्योर आवर स्कूल लेवल चिल्ड्रन विल राइट. आई थिंक ये एक्सरसाइज स्कूल में भी कम कर लिया, मैंने वो भी नोटिस किया था. क्योंकि आई वॉज कीप ऑन वॉचिंग माई चाइल्ड एंड अदर चिल्ड्रन, क्योंकि मैं इवन दो आई एम फ्रॉम हायर एजुकेशन, बट मुझे लगता है कि रूट कॉज क्या है. पहला हमारे बच्चे को पहले ही फर्स्ट लेवल पे ही वो लोग फाइन ट्यून कर लिया ना, तो आगे आगे आके लिखना बंद कर दिया. लिखना जब बंद कर देंगे सोचना बंद हो जाएगा. ये बहुत इंटरकनेक्टेड है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है. वी नीड टू मेक श्योर द टीचर्स विल गिव देम असाइनमेंट्स टू राइट. इसलिए अभी आपको याद है, तो अभी भी कुछ इसलिए याद है कि हम लोग बार बार पढ़ते थे, बार बार लिखते थे, बार बार लिखते थे, बार बार लिखते थे. आई थिंक दिस इज वन थिंग. सो सेकेंड थिंग, वी नीड टू मेक श्योर देर इज अ नो मोबाइल और नो AI क्लासेस. क्योंकि आजकल क्या हुआ, जब बेचारे टीचर आके एक कॉन्सेप्ट समझाने के शुरू हुआ, बच्चे पहले उसका कॉन्सेप्ट का क्या है, उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस क्या है, जस्ट टू ट्रबल टीचर. सी टीचर वर्क इज़ बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड इन दिस वर्ल्ड. क्योंकि बाकी तो छोड़ दीजिए, हाउ यू विल मैनेज 60 monkeys इन अ रूम. हम भी मंकी थे एक जब व्हेन वी आर किड्स, करेक्ट, वी ऑल एग्री, बट वेरी डिफिकल्ट. दैट टू 60 monkeys with mobiles, very difficult. So I think we need to make sure we will keep the mobile outside and AI outside. एंड मैडम आप, आई जस्ट वांट टू सर, आई विल टेक 1 more minute. नेचर के साथ डिस्कनेक्ट होइए. बच्चे पार्क नहीं जाते, वॉकिंग नहीं करते, किसी से बात नहीं करते. दे बिकम अ हाफ zombies, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू. आई थिंक वी नीड टू मेक श्योर वी विल completely take a paradigm shift and and make sure at least half of the day in a school and college there is no mobiles or AI allowed. एंड लिखने का एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर AR VR का ज़्यादा यूज़ करें. अभी रिसेंटली हमने क्या किया, जर्मनी में एक बहुत बड़ा इंजन बन रहा है, तो उसका एक डिजिटल ट्विन लिया था, एंड वी हैव गिवन दैट डिजिटल ट्विन टू आवर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स स्टार्टेड रीवायरिंग दैट एंटायर कॉन्सेप्ट AR VR यूज़ करके, which we have submitted back. The scientists in the Germany, they got surprised. The kind of a knowledge our children have, they did a better rewiring. देखिए क्या है कि इधर where all we need to use technology, we need to use it. We need to translate all this into AR VR so that वो देख के and seeing is believing, right? So इसीलिए we all like videos instead of text. तो हम लोग को वो परसेप्शन पे देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा. ये प्रोसेस हमें करना मैडम. That's what, this is my thought process, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, please, I request Professor Bharat Bhaskar, sir, for concluding remarks. I think we had a very enriching session. We also saw what an IELT is doing and how they're bringing out courses. Then we saw Buddha talked about various advantages, also the perils. The fact is that no matter what we do is going to be part of our life. Banning has never worked in past, it will not going to work in future. What is advantage? What is important is how do we make use and ensure that it does not undermine the growth of human mind. Instead, it promotes the growth of human mind. You asked a question, simple question, that the code can be written by the machine, but what do I learn? The question has to be reversed, that is it important for us to write code? Code was written by human mind to do something better than that. And code was a tool by which we acquired that knowledge and achieved certain objective. The human life is about solving problems around us. So our now syllabus and our curriculum has to change accordingly. We do not ask them question, write the code for this. Instead, we give them a problem, solve that problem. That's where comes your answer to your question, that they will write the code from the machine. If machine writes the wrong code, it will not solve the problem. It will not get the solution. And still the student will fail. So what a student has to learn, how to instruct the machine to do that routine job, generate that piece of code which is going to solve my problem. The second part Buddha was greatly talking about, they are taking away our data, not we paying them for even giving our data, etc. and so on. Unless we have our own solutions. It's a fact of life, because the tool is available and the
what you're paying them is your data. By paying the data for the data, you're getting something in return at a subsidized rate, or in some cases like a WhatsApp, free. The fundamental aspect is that universities have to create their own large language models, their own solutions, which are going to be what we call the EDU or educational version of it. Because lots of experimentation, lots of knowledge gets created in an institutional environment. We was talking about they will get the patent before even I formalize my concept, right? The ChatGPT has come out with a solution, and ChatGPT right now is promoting for educational institute the ChatGPT EDU version. Now, of course, there lies a danger that even though they are promising that your data will remain within the university, what stops them slyly taking away the data and still using it for the training, although they are saying it's not going to be used for the training of their model. It will be used in only enhancing the capability of your university environment. So your research, your ideas, your intellectual property will remain within your university environment. What is more important today is that while BharatGen is already doing a great job of creating our own model, starting from the scripts all the way to current knowledge, etc., and so on, we need to produce amongst multiple application verticals which they are creating is a BharatGen's EDU version. At least even when BharatGen steals the data, we know it's going to remain within Indian boundary. One university may benefit from other university even if they are going to use part of that, even though promising that data will be remaining within your university. So we have to create our own solutions. Ethics related issues again will be solved because you cannot control what ChatGPT, Gemini, etc. are learning. You can only make your model learn the ethical standards of India. What are our cultural standards, where boundaries are going to be brought, that training can be provided if you control the model itself. And that is where it's important that BharatGen initiative done by Government of India, huge investments have already come in, becomes quickly accessible with the educational model as well as the general model to Indian universities at large. I think the biggest danger at the same, on one side I say BharatGen is doing a great job of training so much past data, but they're spread across the institutions and spread across the Indian population is not as fast as it should be, while others are taking lead and moving fast forward. It is time, if we want to have a governance, ethical standards and culture and knowledge of India preserved within India, we need to ensure that BharatGen initiative immediately becomes widely spread and widely available across the country. With this, I think you will also go back to your institutions, try finding out how you can download part of the BharatGen subset if they are saying this open access, but many times the push model from BharatGen may take time to reach you. But the pull model from the universities to BharatGen probably will accelerate the progress, and it is important that how we make use of the technology in higher education will also depend upon how quickly the universities and institutions are able to pull that capability which is being developed by Government of India at a centralized place. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. I also say it's a wonderful session, sir, very enriching. And on behalf of the organizing committee, I am here to propose a short brief vote of thanks. I must thank Professor Bharat Bhaskar sir for chairing this session, and also I am thanking Professor Madan Mohan Tripathi, Professor Buddha Chandrasekhar Rao Garu for giving your valuable time and giving us enriching ideas on this particular issue on leveraging technology and AI. I am also equally thankful to all the partnering institutions, participants who are presented here. So with this, we will end the session here, and we will have a short tea break, and the tea is being served here just outside the hall, and we'll assemble here at 11:45 just after the tea break. Thank you so much once again.
Okay, so welcome everyone. We are starting with the track 6 of idea exchange and sharing of best practices among from our faculty, from various faculty and colleges in India, in Bharat. And we are privileged to have Professor N.K. Lokanath ji, Vice Chancellor, University of Mysore, with us, who will be chairing this session. So I request Professor Poonam ji to please facilitate Professor Lokanath ji. Yeah. Right. So the theme for this track is inclusive growth and regional equity in higher education. Now this has been defined in a versatile format in NEP 2020. So in that context, this session is planned. And I will request Professor Lokanath ji to take over the session and take it forward. Thank you so much, sir. Very good afternoon to one and all. Very good afternoon to one and all. It's really interesting to have an Group 6 discussion on inclusive growth and regional equity in higher education. As we all see that higher education plays a pivotal role in everybody's life. Higher education does many things. As we have seen that Viksit Bharat, for which we are the one to go through these higher education policies and make to enhance the employability, industry interface and holistic development. So that means we need to have an equity growth in higher education. As you all aware that in India is a vast country and it's a very diverse. So equity in higher education, focusing on all the students to be given equal opportunities to access, participate and succeed in higher education, regardless of their background or circumstances. As you've seen that there are a lot of things to be noted here. As I mentioned, India is a vast country and we need to think a lot of constraints in that. Access is very important. Is we have to remove the barriers to financial constraints, geographical limitations and social inequalities. And also we have to create an environment for diverse students, including those from underrepresented groups. And also we have to support system to ensure students complete their programs and their goals, very important. Most of the higher education institutions, just students enrolled and completed degree and they have not achieved the goals. So therefore, I request all my colleagues, we need to have a strategy for equity and growth. The first is we have to provide the financial aid, like scholarships or small grants or small affordable loan through the institutions. So those who are students who are really a disadvantaged students. And also we need to catering the rural students, as India is growing, but still rural students are not able to access to the higher education. So we need to give something importance to rural students, definitely for them, the first generation learners. And also we need to make the inclusive curriculum that is culturally responsive teaching and diverse course has to be supported. And also we should have to mentoring them very well. And that mentoring means counseling or academic support, or depending upon their interest, we need to help them. So there are many challenges in this. So might be socio-economic disparities, or maybe digital divide, or maybe cultural barriers. So there are a lot of initiatives has been done. So as you've seen that NEP highly emphasizes the equitable and inclusive educations, as you already see that. And also now online distance learning made access, expanding the education to online. So today we're going to give a presentation by 5 eminent persons on this field
Professor Mithilesh Singh, Sri Agrasen Kanya PG College Varanasi, and then Dr. K. Sundararaman, CEO Krishna Group of Institution Coimbatore, Professor Kuldeep Sharma, Pro Chancellor Medhavi Skills University Sikkim, and Dr. Ramesh Kadvi, Veer Narmada South Gujarat University Gujarat, and Dr. Vikas Chandra Swarnankal, Mahatma Gandhi Medical University Jaipur. As you all see that education in the earlier days have been studying only to gain the job. Education means to seek a job. Now in my opinion, education is to gain knowledge. That knowledge has to be converted into wisdom. That's where the higher education stands for. And the second thing is, today the scenario has changed because in the competitive world, we need to think about to get a knowledge, education is best. To get a job, you need a skill. Therefore, a student should have to give more importance to education and also to skill. If he has both, and also the very important thing is the student has to get a human values. So therefore, knowledge, skill and values will make a man perfect, and definitely this scenario, we need to teach the knowledge and the skill and also values in the higher educations. With these words, now I request the presenters to give the presentation for 10 minutes each. Thank you. Now I would request Professor Mithilesh Singh ji to please share the insights with respect to Shri Agrasen Kanya PG College Varanasi. Over to you, ma'am. विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में ये जो संस्थागत नेतृत्व समागम के अंतर्गत आज हमें अपने कॉलेज के बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ प्रस्तुत करने का एक मौका दिया गया है। इसके लिए सभी आदरणीय को धन्यवाद। इस सेशन को चेयर कर रहे आदरणीय प्रोफेसर लोकनाथ जी को मेरा सादर नमन, और जिंदल जी को भी। मैं काशी से हूँ और जैसा काशी के बारे में आप जानते हैं कि नॉलेज, स्किल और वैल्यू के समागम में सर्व विद्या की राजधानी काशी का कोई जवाब नहीं है। मैं अपनी 2 लाइनों की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य कृत्य काशीय पंचकम से करती हूँ। काश्या ही काश्यते काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता ये नितेन प्राप्ता ही काशी। यानी काशी सर्व विद्या की राजधानी होने के साथ ही साथ हमें चेतना के उच्चतम शिखर तक पहुंचने का मौका देती है। और जहां तक शिव की नगरी काशी का सवाल है, शिव आदि गुरु हैं। यहीं से मैं अपनी बात को शुरुआत करती हूं। मैं प्रोफेसर मिथिलेश सिंह, प्रिंसिपल श्री अग्रसेन कन्या ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज। मेरा जो आज टॉपिक है दैट इज़ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड आवर इंस्टीट्यूशन, प्रिजर्विंग हेरिटेज एंड क्रिएटिंग फ्यूचर। ना ही ज्ञानेन सदृश पवित्र में ही विद्यते। Source Bhagavad Gita 4.38, meaning indeed there is nothing in this world is pure as knowledge. ज्ञान के बिना या ज्ञान से पवित्र इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और हम सब का जैसे शिक्षा का उद्देश्य सर ने बताया कि सिर्फ जॉब पाना नहीं है, बल्कि ज्ञान को अर्जित करना है, उसे स्किल में बदलना है और फिर वैल्यूज़ को इनकलकेट करके अपनी सोसाइटी को कुछ देना है। ये हमारे शिक्षा का उद्देश्य हायर एजुकेशन में होना चाहिए। यहाँ छोटा सा एक ब्रीफ, चूँकि मैं काशी से हूँ और अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वैल्यूज़ को हम अपने स्टूडेंट के समक्ष रखते हैं, उससे रिलेटेड एक छोटा सा स्लाइड आपको पहले इंट्रोडक्शन का दिया है। लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द पूर्वांचल रीजन वेयर ट्रेडिशन मीट इनोवेशन, एफिलिएटेड विद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। Established 3rd November 1973 and run by reputed Shri Kashi Agrawal Samaj Varanasi with 52 years of heritage in the area of women education. First women autonomous college of Uttar Pradesh and also having a NAAC grade. Our institution have the humanities, science and commerce syllabus. इसके बियॉन्ड भी हमारे यहाँ BVOC एंड और बहुत सारी डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। मैंने बेसिकली 3 स्ट्रीम्स की ही बात की है।
That syllabus according to NEP 2020, which also inculcate a large part of Indian knowledge system that transforming our India as a Bharat education system. I have two campuses. We have two campuses, Bulanala and Paramanandpur, with well-equipped laboratory, 91 classroom, with well-equipped smart classes, which shows our idea of traditionality and modernity. Two fully equipped auditorium named Virangana Lakshmi Bai and Aparajita with the capacity of 1200 students. Museum, ये हमारा USP है हमारे कॉलेज का कि we have a museum our college with a rich museum showcasing Indian knowledge system can be treasure trove for student and researcher that provide hands-on learning. छोटी सी यहाँ पर मैंने स्लाइड में अपने म्यूजियम के 2 फोटोग्राफ्स भी डाले हैं, आपको दिख रहे होंगे. We have a 5 study centers, Buddhist, Gandhi, Buddhist, आप जान रहे हैं गौतम बुद्धा अपदीपो भवा की बात करते हैं, यानी हमें इनलाइटेंड होना है अंदर से, बाहर से नहीं. इसके साथ ही अगर आप अरविंदो की बात करें तो ये नेशनलिटी में स्पिरिचुअलिज्म को देखते हैं. ये देश कोई भूखंड का टुकड़ा नहीं मानते, ये वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं. और इनका जो राष्ट्रवाद है दैट इज स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, वो प्योर राष्ट्रवाद इस तरह का नहीं है, उसमें स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं और अतिमानस के विकास की बात करते हैं, यानी चेतनता के उच्चतम शिखर तक ज्ञान को ले जाने की बात करते हैं. Ambedkar and Women Studies Center to explore, preserve and disseminate Indian knowledge system. 2 libraries, we have 2 campuses and जाहिर है कि 2 libraries भी हैं हमारे यहाँ. First library का जो नाम है वो पंडिता रमाबाई and second library Savitri Bai Phule. It has more than 65,000 books along with journals and magazine and Sarojini Naidu reading room also. We have a well-equipped gymnasium in traditional Indian system. Physical well-being is linked to spiritual growth, yoga and wellness. Gymnasium can complement academic pursuit, fostering overall well-being, cultural heritage. Traditional Indian sports and exercise can be showcased alongside modern fitness. Session स्टार्ट जब हम लोग करते हैं तो उसे पूजन और हवन से करते हैं हमारे यहाँ. तो सेशन स्टार्ट विद पूजन एंड हवन. स्टार्टिंग अ सेशन विद पूजन एंड हवन विच प्रमोट पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअल फोकस एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज. मॉर्निंग असेंबली हमारे यहाँ होती है. मॉर्निंग असेंबली कैन बी अ ग्रेट वे टू कनेक्ट विद इंडियन नॉलेज सिस्टम. कम्युनिटी सर्विस, अभी सर ने भी बात की कि हमें कम्युनिटी सर्विस करनी चाहिए. यहाँ मैं बता दूँ कि हमारे संस्थान द्वारा 3 गांवों को गोद लिया गया है जहाँ हमारे बच्चे कम्युनिटी सर्विस के लिए जाते हैं और उन्हें से फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड से लेकर अगर वहाँ कोई निरक्षर है तो उन्हें पढ़ाने का भी काम किया जाता है. तो इट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. कॉलेज कैन टाई अप टू इंडियन नॉलेज सिस्टम सेवा, selfless service. We encourage students to serve local communities, echoing Indian value system. हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप हमेशा लगता है, बच्चे ब्लड डोनेट करते हैं और ये सेवा है जो सेल्फलेस सर्विस को रिप्रेजेंट करती है. और हमारे कॉलेज में ये चीज़ें पूरे वर्ष में 2 या 3 बार होती हैं. जैसा अन्न वैसा मन, ये कहा गया है कि हम जैसा खाते हैं, जैसा ग्रहण करते हैं, वैसा सोचते हैं. तो you eat so you think. In Indian tradition, food is linked to mental and physical well-being. Food is seen as a medicine impacting body and mind. हमारे यहाँ फूड में श्री अन्न का प्रयोग बच्चों को बताया जाता है और इससे रिलेटेड हमारे यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगाए जाते हैं जिससे बच्चे श्री अन्न के तमाम चीज़ें बनाना सीखते हैं और उनके क्या ट्रेडिशनल और क्या उसका वैल्यू है, न्यूट्रिशनल क्या वैल्यूज़ हैं, ये बच्चों को पता है. स्पीक में के वाराणसी चैप्टर भी है. इट्स प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, आर्ट, कल्चर एवं स्टूडेंट. हमारे यहाँ सुनंदा शर्मा जी का कार्यक्रम हो चुका है. हमारे यहाँ सोमा घोष जी का धरोहर 3 दिन तक कल्चरल प्रोग्राम हुआ है. इसके अलावा बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम हुआ है. राजस्थान का कालबेलिया डांस भी हमारे यहाँ हुआ है. बच्चे उसे जानते हैं, समझते हैं. भारत सेंट्रिक रिसर्च को भी हम लोग प्रमोट करते हैं. इंडियन नॉलेज सिस्टम में एम्स टू ब्रिज एंशिएंट ट्रेडिशनल नॉलेज विथ मॉडर्न साइंस टू सॉल्व कंटेम्प्रेरी सोसाइटल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. इनकलकेटिंग भारत सेंट्रिक रिसर्च इन आवर कॉलेज कैंपस कैन बी अ इनोवेशन हब. हियर आर सम कीज एरिया. करिकुलम रिवैम्प. सर हम लोग ऑटोनॉमस कॉलेज हैं, हमारे यहाँ करिकुलम में 33% एडिशन करने का हमें पावर है.
तो हम उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को इनकलकेट करते हैं और को करिकुलर के रूप में हमारे यहाँ पूरा का पूरा पेपर है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही फिजिकल एजुकेशन एंड योगा सेकंड पेपर है। थर्ड फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर है, जो पूरी तरह से हम लोगों ने उसे अक्षरी अन्न और बाकी चीज़ों से कोऑपरेट करके रखा है। रिसर्च फंडिंग के लिए हम लोग इनकरेज करते हैं फैकल्टीज़ को, स्टूडेंट को। जैसा सर ने कहा कि हमारे पास ऐसे फंड होने चाहिए ICSR और सब चीज़ों से बच्चे उस एरिया में रिसर्च कर सकें, जिसमें इंडियन जो ग्रास रूट प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन भी हम अपने ही कॉन्टेक्स्ट में निकाल सकें। उसके लिए हमें वेस्टर्न मॉडल की ज़रूरत ना पड़े। कोलैबोरेशंस में भी हम लोग अपना ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारे MOUs साइन है। पार्टनर्स विद इंडियन इंडस्ट्री, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, NGOs से भी हमने किया है, जो कि ग्राउंड लेवल पर सेवा भाव करते हैं। खुला आसमान एक ऐसा ही NGO वाराणसी का है जहां से हमारा MOU है, और हमारे बच्चे वहां जाते हैं। और जो हमारे यहाँ गंगा के किनारे हम लोग हैं, जो मल्लाह के बच्चे हैं, जो बहुत छोटे छोटे उम्र के हैं, उनको हमारे बच्चों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है और सिखाया जाता है। Seminar and workshop are there, organized event featuring Indian expert and resource sharing their work. Student project भी हम लोग कराते हैं, encourage student to explore topics relevant to Indian challenges and opportunities. Some future prospects are also there. Next slides. यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं इसमें और काम हो कॉलेज में। जो हमने किया वो हमने बताया, जो हम कर रहे हैं वो बताया, जो हम करना चाहते हैं अब हम उस पर आते हैं। टू ट्रेन स्टूडेंट फॉर सस्टेनेबल लिविंग एंड एनवायरमेंटल बैलेंस, टू प्रमोट होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस इन स्टेक होल्डर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली स्टूडेंट, स्टेक होल्डर्स के लिए भी हमें काम करना चाहिए। उनके पेरेंट्स को भी इससे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वातावरण घर में नहीं मिलता, बच्चा उस चीज़ को अपने वैल्यूज़ के अंदर नहीं डाल पाता। तो कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स को भी हमें लेकर चलना चाहिए। टू प्रमोट टीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर राइटिंग रेलिवेंट लिटरेचर रेस्पेक्टिव देयर एक्सपर्टाइज रिलेटेड टू जीना कैसे है, स्ट्रेसर्स को फेस कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को स्ट्रेस होता है एग्जामिनेशन टाइम में। आप कहिए कर्मण्डेव अधिकारस्ते मां खली सुख कदाचना, हम कर्म ही कर सकते हैं, बेस्ट दे ही सकते हैं, क्या रिजल्ट आएगा ये छोड़ दो। तो अपने आप में IKS को लेकर अगर हमें साइकोलॉजी की बात करूं तो भागवत गीता से बड़ी साइकोलॉजी की काउंसलिंग की कोई किताब नहीं है, और कृष्ण से बड़ा कोई काउंसलर नहीं हो सकता। इसी तरह अन्य एरिया में भी हमें बहुत सारे उदाहरण हैं और हमें उस पर राइटिंग करनी चाहिए। टू प्रमोट एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन स्टूडेंट, टू प्रमोट रेलिवेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन मॉडर्न रिसर्च, translate classical text like Ramayana and Mahabharata with critical commentary, प्रमोशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च आइडियाज़ हम इसमें दे सकते हैं, लाइक IKS के साथ पॉलिटिकल साइंस, जैसे मैंने कहा IKS के साथ साइकोलॉजी को हम करें, IKS के साथ पॉलिटिकल साइंस को लाएं, IKS के साथ हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, जैसे मैंने म्यूजियम को यहाँ इनकॉर्पोरेट किया कि आप म्यूजियम के जरिए इंडियन नॉलेज सिस्टम को, हिस्ट्री के बच्चों को आप कहीं और मत ले जाइए, अपने कॉलेज में ही वो पढ़ें और जाएँ अपने म्यूजियम में उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। इस तरह से हम लोग काम करें। Prepare students for solving modern global challenges and fulfill the dream of सबका साथ सबका विकास by making Viksit Bharat 2047. So in this way we conclude Indian knowledge system is not past, it is a Bharat future. लास्ट स्लाइड में मैंने एक श्लोक डाला है जो चरक संहिता से लिया गया है। शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान ऊहा पोहा तत्व विनिवेशा प्रज्ञा गुणा। द क्वालिटीज ऑफ इंटेलेक्ट आर डिजायर टू लर्न, लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग, रिटेनिंग, अप्लाइंग नॉलेज, एनालाइजिंग एंड फर्म कन्विक्शन इन द ट्रूथ। हम सब इसी के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। Right. Thank you, Professor Mithilesh ji. I think Agrasen Kanya PG College Varanasi is doing a wonderful job, as we have seen.
adding a lot of lessons to take from there. I would like to say a few sentences about Professor Mithilesh Singh. She is very active and more than 500 students participated in the Bharat Baudik Pariksha, and one student is also in the national merit of Bharat Baudiks. I have visited to the college and I have observed that a lot of promotional activities for the Bharatiya Gyan Parampara is taking place at Agrasen PG College, and her team is very strong in the college and doing wonderful job for the Bharatiya Gyan Parampara. Brilliant, brilliant. Very nice. Thank you, ma'am, for sharing the experiences with us. Now I would request Dr. K. Sundarbanam, CEO, Krishna Group of Institutions from Coimbatore, to share the best practices in their institution, please. Most respected Chairman, Vice Chancellor of University of Mysore, fellow speakers, my friends, I first like the opportunity for making a presentation on the topic inclusive growth and regional equity in higher education. Now, this is one of the policy of ADP 2020. Now, before going into the inclusive growth, we'll have to look into what is the current scenario. The NEP itself says that the gross enrollment ratio is 28.4, and there is a lot of regional variance in the gross enrollment ratio. Now, if you look at the gross, next slide. If you look at the gross enrollment ratio, you can see that the Tamil Nadu and Kerala got a very high ratio, whereas this part of India, Uttar Pradesh, Bihar got a low ratio. So there is a lot of variance in the gross enrollment ratio. Next. Now, if you want to achieve 50% growth rate by 2035 as visioned by the NEP, now what is that we have to do? I made a small arithmetical calculation. As per that arithmetical calculation, I found as of now, there are 50,000 colleges in India, including arts and science, engineering, polytechnic, teachers training colleges, and so on. Out of it, let us say that 40,000 colleges are working efficiently. Now, if you look at the 28.5% enrollment as of now, the enrollment as of now is 4.33 crores per year. That is the enrollment in colleges now, which is equivalent to 28.5. So what is the market size? The market size we have is 15 crores of people. 15 crores of people is the market size for enrollment is available. But out of 15 crores, what we are targeting under NEP is 7.5 crores per year is to join the colleges. Now there is a gap in the market. If you look at the market, there are 7.5% is what we are targeting, but what we are achieving is only 4.33. 4.33 crores of students are joining the colleges every year. There is a gap in the market, but gap in the market is not enough for us. Whether there is a market in the gap, that is what we will have to see. As an educational administrator, I will be looking at the market whether there is a gap in the market and there is a market in the gap. Now, if I wanted to look into it, I have to increase this enrollment from 4.33 to nearly about 7.5 crores before 2035. That means there should be an increase of 3.17 crores of enrollment within the next 10 years. And if this increase has to come, what's going to be our contribution? What is going to be the government contribution? What going to be the public contribution? Market is available, product is available, but how to source the product? How to bring the product to the college and make them graduates? Make them within the, graduates, and then turn them into an educated person. This is what we will have to do. Now,
let us look at previous slide. Let us look into the barriers here. If you look into the barriers, if you look into that, the first barrier is the digital divide. What is a digital divide is that there is a limited broadband connectivity in India. Not all places is connected with broadband. There are remote areas where, or village areas where the connectivity is still to be improved. Inadequate device access. People don't have an access to the internet devices. Low digital literacy is also here. Not that every village has got a digital literacy. Rural-urban technology gap is huge in many places, even in the state where I am coming. The second problem is the infrastructure gap. Faculty shortage, it is there everywhere. All of us, we know, college principals and administrators know. Sourcing a faculty hereafter is very difficult. The reason is that they should have got PhD or they should have got NET or SET, and we could able to find only very few people coming with that. And in fact, I am a person who is recruiting for my college, my institution. There are 28,000 students. There are about 1,200 faculty we are managing. Every day I conduct interview. Not even one single day I missed out. But still I have a shortage of faculty. Because 1,200 faculty are available, should be available in the college. But I could never achieve this 1,200. It's always 900, 10,000, 1,100. That is how it goes on. Because we are not able to get faculty. I mean, faculty who will fit for job. Faculty you will get, but fit for job is very difficult to get. Then we have a limited hostel facilities. Then poor campus infrastructure. Then if you look into socio-economic inequalities, caste-based marginalization. It is there all over India. In fact, there are community colleges, there are religious colleges, and within the college there are caste-based marginalization. Now these are all the problem which we face. Religious discrimination. This is one thing each religion has got their own colleges. They support only their religion. And because of that, open access may not be available in some of the places. Then gender disparity, that is also there. Then poverty is the most important thing. Because of that, there is an exclusion is also there. And academic preparedness. Poor school foundation. Schools are not doing well because there it's a result-based teaching is what school does, not knowledge-based teaching. Many schools are only based on result. They are only looking at, I have 100% in plus 2. I have 100% result in 10th. This is what their achievement. Whether how much knowledge the students has gained, they never look into it. Language barriers. Here, this is a multilingual society, and there's a lot of language barriers. For example, I was attending this conference for the last 2 days. 10% only I am able to understand because I don't know Hindi. My state does not allow me to learn Hindi, even though I want to learn Hindi. Unfortunately, I was born and brought up in my state. I have never come out of my state and studied. That's a problem. But still I travel a lot. But without knowing Hindi, I'm able to manage with a little bit this or that. But all of you talk something. I know you are talking very good thing. But sorry, I'm not able to understand this. What can I do? It is not my problem. It is my government. It is my government which has given us this particular gift to us. That's a problem which all of us are facing. We are not able to stand against them. This is what is happening here. I can't talk this particular topic in my state. I cannot live. That's a problem. Then weak transition support, limited career guidance. Career guidance is also limited. Next slide. Now what is that NEP 2020 says about inclusiveness? It says about inclusiveness, ambitious goals to increase the gross enrollment ratio. As I said, they wanted to bring it to 50% by 2035. Then, in multidisciplinary higher educational institutions, which they have started in 2020, now by 2026-27 it started taking off. Now so many, because of legislations are in the parliament now, and these legislations are to go through various committees,
and then it has to be passed through the Rajya Sabha or Lok Sabha, and then it has to go to the president, and after that the opposition leaders will strike, and so many things will come, and implementation will take some more time, maybe 1 year or 1.5 years, but it's going to come. It will definitely come. Already it has been delayed by 3-4 months. I've been talking to many forums, including higher education forums, and said 2025 you have announced, 20 you have announced, but still you have not come out with Higher Education Council. But now it has come out to the Parliament at least. Then credit mobility. There is one more thing called ABC. All of you know about it, Academic Bank of Credit. The purpose of Academic Bank of Credit is each student who passes an examination, certain credits are being deposited in his account, which he can take it to another account when he moves to another college. That college has to accept it. That is the thing. It is like a bank passbook. When you deposit in one bank account, you can transfer it to another bank account. By even using your mobile phone, you can transfer the money from one bank account to another bank account. But are you able to transfer your credit from one college to other college? No, we are not able to do it. Then what is the purpose of ABC? I spoke to one of the forum where what is the purpose of ABC? ABC is created because it's a seamless mobility of students from one college to another college, from one state to then another state, and one country even to another country if that country accepts our ABC. But that is not happening now. But it will happen, definitely happen. But there is a delay. There is a delay. That's another problem we face. Then regional languages and so on. Now, next slide. So next, you can see the mobility from foreign country to India, only this much. From India to foreign country is this much. Now I'm going to complete it now. What is the roadmap and our experience in that? What is going to be our contribution? Next slide. So if you want to have 50% gross enrollment ratio by 2035, now these are all the things to increase the equity. That is, for example, we have to do access and affordability. You should make education access and affordable even for a marginalized society. Then quality and pedagogy has to be improved, and then digital equity, that's very important. Digital equity has to be improved. People should be able to get equipment for using the digital thing. I call the present day students sitting here as digital native. They are all digital native. They are born with what? Born with this. That's what I say. Without this, even my grandson is 1 year old. He can't eat without a cell phone. He has to see, and then only we can feed him. Otherwise he won't. So we have to accept it. So we can't say it is no. Then regional ecosystem. Now last but not the least, okay, all these things we have seen. Now what is the role of the colleges and universities in getting this gross enrollment ratio to 50%? What is our role? Number one, if you want to get, I have my own experience, I'm telling you, what our institution has done. We have identified through satellite districts. We have identified 3 satellite districts. And each district, we have got the whole data of the people who are there, living there, and who are all below the marginalized, and go to every school, collect the data, and we have a digital system through which everything is recorded. And those students who passes +2, not able to come to the college, we identify them and then give them scholarship. Every year, we are now recruiting 100 students from these things and give 100% scholarship, including hostel fees. That's what we do. I calculated now, there are 40,000 colleges, and each college adopt 100 students per year. You'll have 4 lakh students will be joining the colleges every year. That is, we have 40,000 into 100, 4 lakh students will be joining every year. Now what is that we require now? We require only 3.12 lakh students joining more, so that we arrive at 50%. We can have more than that. So all of us can join together, all the colleges can join together, adopt 100 students every year,
We signed an agreement with the Matram Foundation, and with the Matram Foundation, we have now got about 100 students. We have stopped, we have now adopted this, and if all join together, then I think this achieving this 50% is not a big problem. Thank you. Thank you, sir, for sharing the details. Fortunately, you were in Jaipur, so you could speak and not in your state. So I really like that statement of doing things in the most difficult situations. And in any case, NEP talks about a multilingual format, which was the original culture of Bharat. Unfortunately, that got lost in political conflicts and everything. I think we will revive that soon in everywhere. Hopefully in your state as well, sir. So now I would request Professor Kuldeep Sharma ji, Pro-Chancellor, Medhvi Skill University, who's arrived from Sikkim, to share the best practices in Medhvi Skills University. Over to you, sir. Namaste everyone. Respected representative from Government of Rajasthan, all the dignitaries, Lokesh Jindal ji, Professor Loknath ji, and other colleagues. I am Kuldeep Sharma, promoter, co-founder, pro-chancellor of the first Skills University of northeastern part of India, that is Medhavi Skills University. So this was the first university and pioneer in industry integrated higher education in the country. And every one of us thankful to our Honorable PM for gifting this to the country, the NEP. We followed NEP from 2021, and everyone will have to agree with me, will believe me, that with 65% of our population below the age of 35 years, in one way, we are the strength, we are the most powerful nation in the whole world. In another way, if you are not able to integrate skills with education, it is a ticking bomb, our youth. So I will not go into theory. I haven't prepared any speech, just what we have did over the last few years to generate employment opportunity, to fulfill the aspirations of our youth, and connecting industry requirement with academic performance, jointly developing, co-designing, co-certifying higher education programs, not that traditional models which we did our studies from last 40 years. What I did, my parents also did the same content curriculum. They also gone through the same curriculum. I know everyone will have to agree with me. But the need of the time is we need to ask the industry what exactly they need, and we need to design our curriculum. UGC has allowed that. And as per NEP, as per latest guideline of UGC, up to 70% of the content can be on-the-job training. So in Medhavi Skill University, we followed all the guidelines, we designed, we followed apprenticeship embedded degree model, where apprenticeship was embedded in our degree programs, and students, our students, not merely remained as academic students, they became the skill conveyor to the industry, working in the industry, getting experience in the industry, and earning livelihood also. That's we call as earn while you learn. While you are in industry, you are getting stipend at the rate of 12,000 to 14,000 every month. And we have proved in last 5 years that this is a very sustainable model.
I'll take only 10 minutes of your precious time. So I don't think the slides, it will take more than 3 hours. But still, since we have prepared it, we'll go through that. But let me explain some models. Everyone knows about the Boeing as Airbus parts manufacturer, ACUS Group. That's a group based in SEZ, based in Belgavi, Karnataka. We designed Bebok in aerospace manufacturing, first in the country, where our students are doing their practical live training in the industry itself, earning a stipend of 12,000 every month, supporting their families, on-the-job training, academic learning by our faculties. The same model, as per UGC norms, we followed in retail. In Aditya Birla Group, BBA in retail management we launched in Pantaloons. Same model we launched in sound engineering, a very new subject in the country, where the Windmill Recording Studio, Dublin, Ireland, is our partner, industry partner, and B4M Music, a music composer group based in Kerala. They are our Indian industry partner. It's a 4-year program, first in the country again, where 60% of the content is done in the industry itself. And students have started their own studios. Who are in Ireland now, they have started their studios. So just, I'll go through the slides, and I want to request all the higher education representative here that we should aggressively follow upskilling, reskilling, earn while you learn these models, because that is the future of our youth. Yeah, please change the slide. So this is the model of Skill University which you are following. Employment driven and OJT embedded degree, as I already mentioned. Competency for job roles and occupation into university curriculum. So let me tell you, this work integrated learn and earn model, and as employment actions, like how we act as employment actions, we ask the industry what the openings they have, what requirements they need in next 5 years. So accordingly, we redesign our programs every year and upgrade the technical preparedness of our students. So that's why in the industry integrated model, we have now more than 30,000 students doing their on-the-job training. You know, everyone knows about Hyatt Group, everyone knows about ITC Group. They are our partner in hospitality sector. And everyone will be surprised to know that like in normal hotel management programs, only 2 months of internship is available, provided by the institutions, maybe for 3 months. But as a Skill University, following the UGC norms, our students are getting stipend every month, and 70% of the time they are in industry itself, in the shop floor. So the feedback we got from, I'll give you one small example. There's one ITC Moria in Kolkata. So we got feedback from their general manager JM that the students on OJT who haven't still completed their graduation, they became more experienced than the graduates who are working there from last 6 months. And the HR is also saving cost in that, because the students who have done OJT, they are already having 2 years of experience, and they are most competent, most suitable for the industry. It's a win-win model for everyone, for the student and as well as for the industry. So this way, we are generating employment opportunities as well as serving the nation by supporting the industry requirements. Employers as a stakeholder for training, assessment and certification during OJT, as I already mentioned. Assessment, we do periodical assessment. We are also the awarding body of Government of India. The second university
who was recognized as awarding body by NCVT. So we have our own qualification packs on green hydrogen semiconductor. You will find in NQ or National Qualification Register. So recognition of prior knowledge, experience and skills, and link to higher education qualifications. Like the workers who are already in the industry, who could not get access to higher education due to their family background or financial background. So after assessment, we recognize their knowledge and they can be placed in a higher category, like certificate, like diploma, like degree, maybe PG also. And cross-border migration, this is very important. As I told, we have the maximum young population in the world. Recently, we tied up with Scotland Qualification Authority, SQA. There is a body of government of Scotland, where their qualification is recognized in 16 European countries. Jointly, the student from this country, they can join in that 16 countries through the qualifications we are providing. That is cross-border migration. In the similar way, we believe in developing, certifying students for aligning with the qualification, overseas qualifications, so that the students can get job anywhere in the world. And everyone know, like the certificates we are issuing as a UGC recognized university, many countries don't recognize that because they have their own standards. So that's why we need international certification, and that can happen through collaboration only. We did with the international awarding bodies, like we are the awarding body of this country. We tied up with the awarding bodies in England, in Scotland, in Switzerland. So their qualifications are recognized, suppose in 80 countries. So my students can get access to that 80 countries. Already we have our students in Germany. With this story, I will finish this part. Atul Krishna, he was automotive technician working in a mechanic shop in Kochi, earning hardly 20,000 rupees per month. He gone through one of our assimilation program and the language program we have. He qualified to join again as an automotive technician in Germany in Mercedes-Benz at a package of 3,800 euro every month. Means in Indian currency almost 4 lakhs you can say. So that is the opportunities everyone can get, every student of, every youth of this country can get if we tie up with the foreign partners, with the industry partners. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Professor Kuldeep ji, for sharing, sharing what Medway Skills University is doing. I think marvelous job in creating global citizens, and supplying human capital across the globe, and making them imparting industry relevant skills. I think skills have always been undervalued in Indian ecosystem for some or the other, but I think that's gaining traction now. So I think we should be able to get there. But the problem is, I don't know. I'm just putting my point here, my perspective. Skills in India, I was discussing with the secretary, recently I was having a meeting there. So we were just discussing that skills in India is still recognized in a lower value addition spectrum. Research is also a skill. AI is also a skill, but unfortunately that is right now not considered under the skill perspective. So I think that is also something that as a country we need to look forward if we need to really, become Viksit Bharat. Thank you so much for sharing that. Now I would request Dr. Ramesh Gandhi ji from Gujarat, Veer Narmada, South Gujarat University, to share the best practices being practiced in Gujarat. Over to you, sir. Sir, it's Narmad, not Narmada. Narmada is river, and Narmad is name of poet. Little correction, Narmad. Narmada is well-known river from Madhya Pradesh to Gujarat.
Namaste. I am Dr. Ramesh Dan Gadvi, working as Registrar at Veer Narmad South Gujarat University, Surat, Gujarat. Our university was established in 1965 and recently in 2065 we have completed 1925 we have completed 60 years. So this is our grand celebration year of the establishment. I would like to introduce my university within 1 minute in a brief. Keep one first slide. Our university has 300 affiliated colleges. We have 300 affiliated colleges which caters the needs of 7 districts of the South Gujarat and 1 union territory, that is Dadra Nagar Haveli. I would like to start my talk with one best practice, one good story. एक सफल कहानी के साथ मैं अपनी बात को शेयर करना चाहता हूँ. हमारे कलीग ने बताया ABCID के रिलेटेड, लेकिन अभी शुरू नहीं हो रहा है. ABCID का डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है. लेकिन जब ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सर, सम पीपल ऑल्सो डोंट लाइक नेशनल, दे यूज द वर्ड न्यू मे बी ओल्ड आफ्टर समटाइम्स, बट वी यूज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. Sir, after the implementation of National Education Policy, we emphasize on the student data, DigiLocker and Academic Bank of Credit. I would like to show you one video. Please go through on 3rd or 4th slide. आगे जाइए. ये वीडियो अगर हो सकता है तो देखिए नीचे. Vice Chancellor Veer Narmad South Gujarat University to please join us on the stage. The university has uploaded 100% data with Apan ID that holds the highest number of map records in the country. जोरदार तालियां के लिए वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, और जो इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं इसके लिए वाकई आज अभिनंदन होना चाहिए. सेकंड पे आ जाइए. ये जब ABCID जब शुरुआत हुई थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो हमारे जो विश्वविद्यालय है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है. एक हमारा सूरत है जो इकोनॉमिक ग्रोथ हब है पूरे गुजरात का और राष्ट्र का भी, और हमारा जो कोस्टल एरिया है उसमें सब सिटी सिचुएटेड है. 50% पार्ट आवर कवर्स सिटी एरिया एंड द रेस्ट ऑफ आवर पार्ट 50% पार्ट इज कवर्ड बाय द कंट्री साइड विच इज़ नोन एज ट्राइबल एरिया विच इज़ डेंस फॉरेस्ट, आहवा डांग जंगल विच इज़ नोन एज दी आहवा ट्राइबल बेल्ट. सो हमारे 50% जनजाति के बच्चे हमारे वहाँ हैं. और जब ये ABCID क्रिएशन का जब शुरुआती दौर था तब हमने ये एक मूवमेंट, एक मुहिम चलाई कि हर एक बच्चों को, जनजाति के बच्चों को भी, जहाँ वो रूरल एरिया है, कंट्री साइड है, वहाँ नेट कनेक्टिविटी नहीं है, फिर भी हमारे बच्चों ने 100% ABCID क्रिएट किया था. वो एक हमारी सफलतम स्टोरी थी. ये 2024 में जब ये पहली बार ये जब लॉन्च हुआ था तब हम देश में टॉप किए थे. अभी हमारी विद्यार्थी की संख्या कम होने के बाद अभी हम टॉप पे नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में नेक्स्ट पे जाइए तो हमारा ये एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है. हमारे जनजाति के बच्चों ने भी ये काम किया है. और अब जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे वहाँ जनजाति के बच्चे के लिए हमने सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडी शुरू किया. 2 साल से हमारा ये चल रहा है सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडी. साथ में जब हमारी ये भारतीय ज्ञान परंपरा की हम बात करते हैं तो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में, आप सेकंड ही रखिए, बाद में आता हूँ, मैं आपको बोल दूँगा. और पीछे वाली प्रीवियस, और प्रीवियस, बस, और प्रीवियस, बस यहीं पे रखिए. तो हमारे वहाँ अब जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो हमारे वहाँ 3 साल से सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ चलता है, जिसमें सक्सेसफुली एक हमारे बच्चों की बैच ने वो पास आउट कर दिया है. और सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज़ भी हमारा 2 साल से हमारे वहाँ ये दोनों कोर्स भारतीय ज्ञान परंपरा के रिलेटेड हमारे वहाँ कोर्सेज चलते हैं. आगे जाइए. हमारे वहाँ एक बच्चों के लिए जब अपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया तो उसमें एक ODE ऑन डिमांड एग्ज़ाम का एक प्रावधान है. उसमें हमने, आगे जाइए, 2 हमारे जो बच्चे थे, ये पेरिस ओलंपिक जब खेला गया तो 2 हमारे स्टूडेंट ने, छात्रों ने आगे पेरिस ओलंपिक में पार्ट लिया था. और उस पेरिस ओलंपिक, ये 2 हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में पार्ट लिया था. तो उनकी एग्ज़ाम लेना बहुत मुश्किल था
क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे थे, कहीं विदेश में थे, उनके लिए एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल था। और उस समय के हमारे then the एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गुजरात वाज ऑल्सो आवर स्टूडेंट, वो हमारे छात्र थे, बाद में वो विधायक बने और बाद में वो शिक्षा मंत्री बने, लेकिन वो हमारे छात्र थे। तो जब वो शिक्षा मंत्री बन गए तो उनको भी वो एग्ज़ाम देने के लिए, वो मंत्री बनने के बाद थोड़ा दिक्कत रहता है। तो ये हमारे 2 ओलंपिक स्टूडेंट थे जो छात्र थे, ओलंपिक में पार्ट ले रहे थे, उनके लिए हमने ऑन डिमांड एग्ज़ाम सर सिंस स्टार्टेड ऑफ NEP वी आर इम्प्लीमेंटिंग। तो शुरुआत से हमने ऑन डिमांड एग्ज़ाम लिया है। हम क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम संपन्न होता है बाद में बच्चों को एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद वही मंथ में एंड में एट हीज और हर कन्वीनियंस वी आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम्स, ऑन डिमांड एग्जाम्स फॉर सच स्टूडेंट्स जिनको ये एग्ज़ाम देने के लिए समय नहीं रहता। जैसे हमारे कुछ बच्चे जैसे आर्मी में थे तो उनको आर्मी से छुट्टी नहीं मिलती थी, तो ऐसे बच्चे आते थे हमारे वहाँ एग्ज़ाम एक्सटर्नल कोर्सेज में जो पढ़ते थे कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज में, तो उनके लिए हमने वो भी किया था। ये हमारा एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम का है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने डिग्री लिया था हमारे ऑनरेबल गवर्नर के हाथों से। नेक्स्ट पे जाइए। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो हम 3 साल से जो हमारा पदवीदान समारोह होता है, कॉन्वोकेशन सेरेमनी होता है, उसमें पूर्णतः भारतीय रूप से हमारा पदवीदान समारोह का आयोजन करते हैं। उसमें तैत्तरीय उपनिषद के गान से, वेदोक्त मंत्रोच्चार से, सरस्वती और गणपति की पूजा से वो हमारा पदवीदान समारोह होता है और उसमें वैदिक राष्ट्रगान किया जाता है। तो पूर्णतः भारतीय ज्ञान परंपरा को फॉलो करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसंधान में विश्वविद्यालय में कार्य हो रहा है। आगे जाइए। ये कुछ चित्र है वहाँ जो जैसे नवरात्रि में कन्या पूजन का, गुजरात में, राजस्थान में ये कन्या पूजन का बड़ा एक महत्व है। ये शक्ति पूजक जो लोग रहते हैं उनके लिए महत्व का पर्व है। तो हमारे वहाँ हर नवरात्रि में हम कन्या पूजन का कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय पे होता है। आगे जाइए। और आगे ये जो कुछ चित्र है जो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो हमने, आगे जाइए लास्ट वाला। 2-3 बातें करके मेरी बात को मैं संपन्न कर देता हूँ। ये हमारे वहाँ जो परिसर है 210 एकड़ में, गत साल हमने 14,000 पौधे लगाए थे। अभी पर्यावरण, एनवायरनमेंट इज़ ए कंसर्न एंड बर्निंग इश्यू फॉर ऑल, हमें पता है कि पर्यावरण के लिए तो 14,000 पौधे हमारे परिसर में, और उससे पहले के साल में 7,000 लगाए थे। अभी उसके डबल गुना संख्या में हम पौधे रोपण करते हैं, ट्री प्लांटेशन होता है, और जो 7,000 लगाए थे उसमें से 95% पौधे बड़े हो गए हैं। अभी इस साल हमने 14,000 पौधे लगाए हैं। हमारे यहाँ आपको पता है जब हम NTF नेशनल टास्क फोर्स और जो बच्चे सुसाइड कर रहे, अभी गाजियाबाद की जो दुर्घटना हुई, तो उसके लिए हमारे वहाँ मनोविज्ञान केंद्र भी चलता है, और मनोविज्ञान केंद्र में फुल फ्लेज वी हैव 5 काउंसिलर है, मनोवैज्ञानिक है, जो उन बच्चों से ऐसे काम कर, कोई उनका काउंसलिंग वगैरह चलता है। एक बात, अंतिम बात करके मेरी बात को मैं संपन्न कर रहा हूँ। हमारे वहाँ ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ट्राइबल बेल्ट होने के बावजूद भी हमारे बच्चों ने ABCID क्रिएट किए थे, और हमारे वहाँ हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है 100% ऑटोमेशन है, ERP सिस्टम है हमारा गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का GIPL करके जो कंपनी है उनसे समर्थ में भी है, समर्थ वाला भी पार्ट करते हैं, लेकिन बाकी का जो हमारा है वो 100% गवर्नमेंट की कंपनी है, उनसे हमारा ERP से ऑफिस ऑटोमेशन 100% ऑफिस ऑटोमेशन है। बस यही करके मैं मेरी बात को मैं संपन्न कर रहा हूँ। धन्यवाद। Sir, I want to add one thing. I also belong to the same university. I am working in biotech department in this university. We also have one practice of plastic waste management. We are preparing eco bricks. Students are preparing the eco bricks. Using plastic. We are taking plastics from staffs and all members. We cut it into small pieces, we convert it to microplastic, and then we prepare eco bricks. So that is also one practice. We also have a vermicompost setting in our department, in biotech department. So that is for environment concern we are also working. Thank you, Dr. Ramesh ji, and sorry for pronouncing wrong name because I had it wrong typed with me. So sir is from Veer Narmad, South Gujarat University, and from Surat, and sharing about the ABC and everything you shared. And during the convocations, I remember, Shiksha Valli is a very good tradition that we can follow. I don't know whether it is in practice there or not, but Shiksha Valli is a very good Indian tradition system which can be practiced in the convocation, especially the first chapter. Thank you. Over to Professor Loknath ji. Thank you. Thank you very much. So all the 4 speakers spoke about many things about
higher education system in India. We are in the crossroads because Dr. K. Sundararaman is mentioning that our GER rate. So we have a quality and a quantity. So I am basically a professor of physics. I cannot agree with both quantity and quality can go together. That's the problem in education. And also he mentioned about the new skill universities. Of course, skills are very important for a day, but skill has to be imbibed by the students, not by the university, not by the institutions, not by the government. So that's the most important thing. And also, the last speaker also spoke about Dr. Ramesh Gadvi, talking about the technology advances in his universities. So these are all the important things has been happening. And also, Professor Mithilesh Singh, she has made a lot of introduction of courses which are relevant to the IKS system. So that's also good. So the first and important thing is food, the health, that's the most important. What happens after higher education nowadays, students? Students are taking the junk foods, not the real staple food for this. So who has to teach for this? So health is wealth. If I have a good health, I can be a better person in the society. First is health. That is not given importance. So I urge all the directors, principals and vice chancellors, make the students to have a good food in their lifetime, because today the food is lot of adulteration is there, you can say a lot of things are there. And moreover, I will give a simple example. Our universities, one of the oldest universities, it was established in 1960. So we are not born at that time. And it was the 6th oldest university in India. And it is the first university established outside the government. That's why our king family has made this Mysore University. And very special is, see there will be 3 Bharata Ratnas. One is the founder of the university, that is Sir M. Vishweshwar. Everybody know that a great engineer, he got the Bharata Ratna. And then the faculty, then President of India, Dr. S. Radhakrishnan, who got the Bharata Ratna. And the student, Professor C.N. Rao, he got the Bharata Ratna. So 3 Bharata Ratnas and 3 unique people that's only possible in this country, the Mysore University. So now you think of, does they have a skill? Does they have something else? Of course they have a knowledge. They have a thinking of deep understanding. So people are thinking about too much about subject, but nobody worrying about the vertical knowledge of subject. That's the way we are lost. Skill is a part, in my opinion. First the subject. If you have a subject, and you will get an objective. If you do not have a subject, that means we should learn from the older system where people have made a lot of contributions. And one more thing is we have to know that the first Jnanpith Award is to the Vice Chancellor of University of Mysore. The first Jnanpith Award. See how they will become converted into them. At that time there was no model, no mobiles, no machines, no computers. But how communication has been done? How can they written in a better way? So that means we need to think ourselves. The education system has changed because the quantity. He mentioned that every university has a problem for appointment of teachers. We don't get a quality teacher. Teachers are available, not the quantity. So therefore, and also we should look at the growth, because India is a very vast country and it has to be improved in the rural. Still there are many pockets of country does not have an entry into the higher education. So therefore, we should make an effort of this. Certainly this conference will bring you some idea about the higher education and about the growth as well as the accessibility to all the people. And also I thank the organizers for giving us the opportunity to speak on this, and thank you very much. If there are any questions, please do ask questions now. It's open. If there are no questions, it's also time is up, so we can go for lunch or anything you want to do. That's it. Thank you very much.